A very good morning to all of you. Welcome to day 2 of our boot camp. Today we will be talking about, we'll have a quick discussion on Good morning, ma'am. partnership, introduction to partnership. Starting from introduction, we will move to admission, Good retirement, morning, ma'am. and death. Good morning, So, ma'am. yeah, good morning, Pawan. So when we are talking about introduction to partnership, I'll be covering mostly the questions which has been asked from your previous year papers and MTP. We will be able to do one or two questions of each chapter, which will be covering your all concepts. Plus all the adjustments I will be taking care of through one small examples. I'll be sharing with you today all the lectures which we generally conduct in the regular classes, and that would be the base to show you all the examples to understand the major part of it. Okay, so let's start with the introduction to partnership. I am not getting more. No, I'm not waiting for more students because then our session gets delayed. Introduction to partnership. My screen is visible to all. Can you just thumbs up or I'll just come to know? Is my voice okay? Yeah, Pavan, is it okay? Yeah, you want to say something? Ma'am. Excuse me, ma'am. Yeah, Pavan, please tell me. Ma'am, if you don't have any problems, so ma'am, please only 5 मिनट के लिए मैम आप कल वाला एक मेरा डाउट था मैम उसको प्लीज सॉल्व कर दीजिए. I requested you to keep here after lecture, but आप थे नहीं. But मैम I just एक्चुअली मैम मैंने आपसे कहा था जैसे कल नेटवर्क में मैम थोड़ा इशू हो रहा था. we don't have a problem here in the network, dear. All the students are here. Please check your network from your side यस मैम. because मैम there I understand शुरू from में तो मैम नेटवर्क स्ट्रेंथ सही थी बट मैम जैसे ही आपकी क्लास का लास्टिंग जब लास्ट फेज था मैम उस वक्त मैम नेटवर्क इशू हो रहा था. that's तीन okay. चार बार मैंने मैम रिकनेक्ट भी किया था नेटवर्क बट नेटवर्क So इशू maybe कंटिन्यूअस at था. your side it's a problem. So that's okay. यस मैम. Okay, so what is contingent liability? Contingent liability means those liability, those obligations which cannot be assessed today, and the assessment, the possibility is depending upon the future event. उसका होना या ना होना आपके future event पे depend करता है. Now what does that mean? आप आज बोल दो मैं ये काम करूंगा अगर मेरे यहाँ पे बारिश हुई तो. So the possible obligation is not arising, it is on the basis of the future event. So if the obligation arises due to the past event, then we need to create a provision. And if the obligation is on the basis of future event, you can't create a provision. There is a probability, there is no possibility. There is a difference between possibility and probability. Yep. When you have a possibility, you can create a provision. But if you have a probability, on the basis of probability, we cannot create a provision. Probable obligation बोलते हैं उसको. So that's how on such contingencies may or may not happen. होगा या नहीं होगा पता नहीं. So may or may not happen is the condition which cannot be accounted in our books of account, and hence it is always shown outside the balance sheet. इसको बोलते हैं off balance sheet item. It is not a part of balance sheet item. Okay. क्वेश्चन थ्योरी का बनता है, यू कैन चेक इट इन अ मॉड्यूल. डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी. लास्ट लेक्चर में, यस्टरडेज लेक्चर आई शोड यू दैट in my notes. Ma'am, please can you Difference. elaborate it with example? Example is simple. It's a case. For example, your case is pending in the court. You don't know whether you will win that case or whether you will lose that case. Simple. वो डिपेंड करता है फ्यूचर के होने पर. अगर आप केस जीत गए तो आपके मजे, नहीं जीते तो आपका लॉस. You can't book that provision now. I Because want it to ask depends you upon that the what is the main difference between liability and contingent liabilities? liability is the confirmed liability. Contingent liability मतलब contingency liability depending upon the future event. Creditors को Probability. पेमेंट देना है तो वो liability है. केस कोर्ट में केस चल रहा है वो liability नहीं है, वो contingent liability है. Okay, ma'am. Means expectation, future expectations. Not expectation. It's not an expectation. Expectation is not a correct word for the liability.
मैम प्रोबेबिलिटी. या प्रोबेबल ऑब्लिगेशन बोलते हैं उसको. ओके मैम, थैंक यू मैम. चलो, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर टुडे फॉर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप. दैट इज वन. पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932. मैं इसको सिंपल लॉजिक में बताऊं तो द लॉ which you are having in your law subject into पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अकाउंट्स में है. So whatever you have studied in law, the entire accounting implication will come here till dissolution of partnership firm. So partnership किसके अंदर आता है? Partnership Act 1932, where we see two or more persons working together in a relationship where they are running a lawful business. Business means legal business, okay? Where all people, all partners are working together, or any one partner is working on behalf of all other partners. So which is called as a sleeping partner or an active partner. So in accounts, we have nothing to worry about whether the person is an active partner or a sleeping partner or a dormant partner. हमारे लिए सिर्फ उसकी accounting important है. All the individual partners are called as a partners, and collectively they are called as a firm. The relationship under which they are running that business is called partnership. Simple. So हमारे लिए accounting perspective से समझना जरूरी है firm कौन है, together all the partners, and partners मतलब individuality. Why we are talking about individuality? Because if one partner will move out, again accounting treatment would be different. One new member is coming in as a new partner, the accounting treatment gets changed. So thereby partner word is important for us. Then comes, I'm just putting up a quick revision, okay, before we start with the practical implication of all the things. All the agreement, generally the written agreement is not compulsory, it is suggestive. Only in Maharashtra state partnership deed is compulsory to be written. Otherwise, Partnership Act 1932 suggests that you may write in writing. You may write, you may have an agreement in writing. That writing agreement is called as partnership deed. And if the partnership deed is not saying or is silent about some points, मेंशन नहीं किए हुए, पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो these are the 5 points which will always be considered. All 5 points have to be followed if nothing is given in partnership deed. That means if partnership deed is not mentioning about the profit sharing ratio, the PSR will always be treated as equal. So if nothing is given about PSR, we will always treat that all partners are having an equal distribution. Second, no allowance on interest on capital. Partners will not get interest on capital. Partners will not be giving interest on drawings. So no ही है सब. Okay, so equal profit sharing ratio, no interest on capital, no interest on drawings, no salary, no bonus, no commission, nothing. And yes, if partner has given a loan to the firm, that means he's eligible to give an interest on that. So firm will be giving an interest to partner's loan, that is at the rate of 6% per annum. This rate has not changed since ages. यही चल रहा है. There is no interest on capital. There is no interest on drawings, no salary, no commission, no bonus. Only partner's loan is eligible for the interest, which is at the rate of 6% per annum. So if you see all the 5 points, other than that, if nothing is mentioned, we will not read anything. So if partnership deed is silent, only these 5 things would be considered. Silent means if nothing is mentioned in the deed about the PSR, about the capital interest, about the drawings interest, no need to give. But yes, if it is mentioned in the partnership deed, then it would be applicable. Excuse me. Yeah. Can I ask you a question? Yeah. Why did you do salary and drawings? Like, Sorry? in previous question, you told no salary and no commission. That's why? Because salary and commission is a part of the appropriation. It is like a diversion of profits. Thank you, ma'am. Yeah, so we call it as a diversion of profit. अगर हम अपने ही profits में से capital पर interest दे रहे हैं, it is treated as that the profits are being divided, distributing to the partners.
So it is a diversion of the profits, and hence they say अगर कुछ mention नहीं है, don't give. If mentioned, but then in that case we have to give. That is why we call it as an appropriation of profits. उसके लिए आप P&L appropriation account बनाते हो. We'll come on that. Thank you. Then comes interest on capital, a very interesting topic. Now we know, as we have seen, that capital, when we are talking about the capital, the first and foremost adjustment for today is capital. To maintain the capital in partner's account, there are two methods to follow. One, either you use a fixed method of capital or you use a fluctuating capital. What is the difference between fixed and fluctuating? Fixed means the capital which has been introduced in the business. The capital which has been introduced in the business is fixed in nature. It doesn't change. It doesn't change. That means the capital introduced, permanent introduction, and permanent withdrawal will be shown in one account, and we will be making a two accounts in this case. Why two accounts? One account is for the permanent capital and one account is for all the fluctuations. For that fluctuations, we call it as a current account. We call it as a current account. So when a partner is introducing the money in the business, it will hit my permanent capital account. But the partner is receiving profits, partner is receiving salary, commission, interest on capital, everything will be routed through the current account. So जितने भी साल में जो भी fluctuating items उसको मिल रहे हैं, we will not touch the permanent capital, we will be only taking care of the current account. Fluctuating says it doesn't make a difference of permanent and current. Everything would be covered under fluctuating, which is a PC account. जो आप admission retirement में एक account बनाते हो, उसी को fluctuating बोलते हैं. Because PCA में you write buy balance brought down, buy reserves, buy goodwill, buy, you write all, buy salary, buy commission, buy interest on capital, all the items in one account. That is called as a fluctuating method. So fixed and fluctuating, both are different methods. In fixed method, your capital does not change. In fluctuating, it keeps on changing. Why? Because we are booking all the accounts, all the items in one. Okay. Then comes, why I'm talking about this? Because now we are going to do the first adjustment, which is interest on capital. Interest on capital. The most important thing. 1st April, 31st March. 1st April, 31st March. हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं. 31st March को we pay a interest on capital. For which year? For the entire 1 year. That means to pay interest, we should know the opening balance of interest. Opening balance of capital to know the interest. Right, 31st March के कैपिटल बैलेंस पर थोड़ा ना इंटरेस्ट दोगे. कैपिटल बैलेंस कौन सा लोगे? 1st April के कैपिटल बैलेंस से, बिकॉज वी हैव यूटिलाइज दैट अमाउंट थ्रू आउट द ईयर. तो अगर मेरे पास यहाँ पर 1 लाख का कैपिटल था, तो 1 लाख के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पूरे साल का मिलेगा. दैट इज वन. If on, let's say on 1st October, new capital has been introduced of 10,000, तो उसके ऊपर 10,000 के ऊपर 1st October से इंटरेस्ट मिलेगा. So first of all, we should know what is the opening capital. आप बैलेंस शीट में, रिमेंबर बैलेंस शीट में फाइनल अकाउंट्स जब बनाते हो, तो बैलेंस शीट में आप अपना कैपिटल कैसे लिखते हो? यू राइट कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स. याद है? ऐसे ही लिखते हो. और अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई होती है तो प्लस एडिशनल कैपिटल, and it becomes your closing capital. This is the opening capital. This is how you generally write it in when you calculate in a balance sheet. Capital plus profits minus drawings minus interest on drawings plus additional capital plus interest on capital, and it becomes the closing capital.
Now in the question हमें ओपनिंग कैपिटल दी ही नहीं होती पार्टनरशिप फॉर्म में. इफ यू वांट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे विल नॉट गिव यू अ ओपनिंग कैपिटल, यू हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल. कैसे? क्योंकि आपको जो बैलेंस दिया जाता है वो कौन सा बैलेंस होता है? वो क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस होता है, वो ये वाला बैलेंस होता है. सो फ्रॉम हियर रीचिंग टिल हियर, फ्रॉम क्लोजिंग यू आर मूविंग टुवर्ड्स ओपनिंग कैपिटल. उल्टा जाना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर. तो कैसे निकालोगे? क्लोजिंग में ओपनिंग में आप क्या करते हो? ड्रॉइंग्स माइनस करते हो. तो क्लोजिंग में क्या करोगे? ऐड. क्वेश्चन विल गो ऑन अ रिवर्स साइड. So closing capital plus drawings minus additional capital will give you opening capital. Now calculate the interest. So पहली गलती जो बच्चे करते हैं, interest on capital is always calculated on opening capital of the partners, including if any additional capital introduced or withdrawn. तो सबसे पहले आपका बेस क्या होना चाहिए? आपका बेस होना चाहिए, आपको ओपनिंग कैपिटल आनी चाहिए. एंड देन ऑन दैट बेसिस ओपनिंग कैपिटल से लेके देखो क्या चेंजेस हो रहे हैं, नया कैपिटल आ रहा है या विड्रॉन हो रहा है. एंड देन ऑन दैट बेसिस वी कैलकुलेट फॉर द फुल ईयर. सो इफ इट इज अ फिक्स्ड कैपिटल, वहां पे तो कोई चेंजेस ही नहीं होते हैं, वहां पे तो सिर्फ कैपिटल होती है, परमानेंट कैपिटल कमिंग इन, परमानेंट विड्रॉल गोइंग आउट, दैट्स इट. एंड इन दैट केस द ओपनिंग कैपिटल इज इजी टू कैलकुलेट. But if it is a fluctuating capital, from closing to opening going back, you have some salary, commission, bonus, interest on capital, profit, सब कुछ होता है. सबको माइनस कर लो, सबको हटा दो टू रीच द ओपनिंग कैपिटल. सो सेम कॉन्सेप्ट है ये जो फाइनल अकाउंट्स में हम यूज करते हैं. कैपिटल प्लस प्रॉफिट minus drawings is equal to the closing capital. So if you go backwards, it's closing capital plus drawings minus profit is equal to opening capital. Correct? So on that basis, let's take a simple example. See, this is a very simple example to understand. X and Y started business on 1st April 2022. So I have put it everything on the bar again. 1st April को कैपिटल था 5 लाख, ठीक है, एंड 3 लाख दोनों पार्टनर्स का. सो एक्स का कैपिटल था 5 लाख एंड वाई का कैपिटल था 3 लाख. फर्स्ट मे, ऑन फर्स्ट मे एक्स इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख. सी आई हैव रिटन इन अ ग्रीन पेन. एक्स इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एंड वाई withdrews 50,000 फ्रॉम हिज कैपिटल. एक्स इज इंट्रोड्यूसिंग, वाई इज विड्रॉइंग. और 1st अक्टूबर को उल्टा हो रहा है. X is withdrawing 2 lakh and Y is introducing 2,50,000. And they are saying interest on capital is 6% per annum. Now there are changes. What are the changes? Let's talk about first X, only X. Let's talk about only X. What is happening in X? X has 5 lakh ka capital in first instance. He has introduced 1st May को 1 lakh and he has withdrawn 2 lakh rupees on 1st October. So at the end, of course, the capital balance is not same as 1st April. It will change. But interest on capital will be always on a running item, running balances. For example, 5 lakh उनका कितने महीने तक रहा? There is a change on 1st May. Only for 1 month. Only for 1 month, 5 lakh was applicable. So 5 lakh के ऊपर 6% कितने months का? 1 month का, which is 2,500. Now on 1st May, what is the new balance? 5 lakh was the earlier balance. Now he has introduced new capital of 1 lakh. It becomes 6 lakh. So 6 lakh. Next change is happening on 1st October. So May, June, July, August, September. For 5 months, the balance remains 6 lakh. 6 lakh into 6% into 5 months. On 1st October, out of 6 lakh, X is withdrawing 2 lakh rupees. 6 minus 2 lakh, 4 lakh. 4 lakh is for how many months? From October till March, there is no change for 6 months. So 4 lakh into 6 months into 6 upon 12 is 12,000. The total capital becomes 29,500. 29,500. So just see the balance.
Just see the change in the balance happening. In the same way, you can calculate it for the Y as well. What is the opening capital? I'm calculating Y over here only. What is the opening capital of Y? 3 lakh. For 6%. For how many months it remains 3 lakh? Because the next change is happening on 1st May, only for 1 month. So we'll calculate only for 1 month. That is 1. Second, on 1st May, what is happening with Y's capital? He's withdrawing 50,000. So the new balance becomes 2,50,000. 6%. For how many months now? The next change is coming on 1st October. Again for 5 months. We have reached to 1st October. Y has introduced more 2,50,000. The earlier balance was also 2,50,000. Now it becomes 5 lakh into 6%. For how many months? 6 months. So if you see the Y's capital, the interest would be applicable as and when the dates are changing. You can calculate it with me simultaneously to check. 15,000 plus 6250 plus 1500. 22,750 is the answer. Right? So this is how the first and foremost key takeaway is interest on capital will always be calculated on the opening capital. To reach to opening capital, either you have to go backwards, or if opening capital is given, then you have to change, you have to see the change, whether it's withdrawn or it's coming as a new additional capital and calculate it. A very interesting point, a very one basic mistake which I have seen in the students' papers, that they just got confused कि capital किस पर interest लगाना है. And sometimes I have seen the students try to keep the interest on capital on our closing balances जो सब कुछ settlement करने के बाद आते हैं. So please don't do that. Capital के ऊपर interest हमेशा opening capital पर होता है. Plus if there is some addition or withdrawals during the year and you have a date, then this would be applicable. Okay. That is the first concept. Then comes the interest on drawings. Interest on drawings, the next second adjustment of our introduction to partnership. Interest on drawings. हम 12th में बच्चों को generally आपने पढ़ा होगा that interest on drawings जब भी calculate होगा, it will always be taken 6/12. जो भी rate आएगा उसको by default average करना है 6/12. There is the reason of it. There is a reason of it. I'll quickly show through it because this is a very detailed topic otherwise. Interest on drawings, we always tell to the student, if nothing is given, always consider it as an average. जो भी rate of interest दिया गया है उसको 6/12 से divide कर दो. You have to do it. The reason is on the next page. I'll show you the reason. This is the reason. What is the reason behind it? We don't know. If you know the drawings had been happening every month, तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट सेम नहीं लगा सकते. If the partner is withdrawing the money, on 1st of every month, for example, he is withdrawing the money on 1st April, then 1st May, then 1st June, then 1st July, then 1st August, every month, 1st of every month. So interest cannot be applicable for the full year, because if the partner is withdrawing the money on 1st March, that means on such drawings interest is only applicable for 1 month, 1st March to 31st March. एक महीने का interest लगना चाहिए ना? Why for such drawings the interest could be applicable for full year? That's not practical. So we say interest on drawings if withdrawal is happening 1st of every month. तो अगर वो 1st April को पैसा विड्रॉ करता है, interest would be applicable for full year, 12 months. If he is withdrawing on 1st May, interest would be applicable for 11 months because April में तो उसने withdraw किया ही नहीं उतना पैसा. June
10 months, July 9 months, and it keeps on decreasing till 1st March. 1st March he is withdrawing, the interest would be applicable for 1 month. If you do the total of all these, it will come 78 months. हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं. 78 divided by 12 is 6.5 months. That means if a partner is withdrawing the money on 1st of every month, you don't need to multiply by 6 by 12, you need to multiply by 6.5 months. See? If a partner withdraws fixed amount in the middle of every month, बिगनिंग और मिडल में कितने मंथ्स का डिफरेंस है? 15 दिन का. तो वही मैंने आधा महीना हटा दिया 6/12. उसका लॉजिक समझाने के लिए आई एम अगेन गोइंग बैक. इफ द पार्टनर इज विड्रॉइंग मिडल ऑफ द मंथ, मतलब 15th April को इफ इज विड्रॉइंग, the interest would not be applicable for 12 months, the interest would be applicable for 11.5 months. See? Similarly, it will go decreasing, and in March, 15 March से लेके 31st March, आधा महीना, तो आधा महीना ही लिया. If you do the total of all, it becomes 72 months. You take an average, it becomes 6 months. This is the reason we always take the interest on drawings on an average on the assumption that partner is withdrawing the money in the middle of month. इसीलिए हम 12th में जब SYJC वाले बच्चे हैं, अगर वो महाराष्ट्र में या किसी भी बोर्ड में, CBSE में, ISC में, we generally tell to the student it is 6, just take a 6/12. The reason is we are always assuming the partner is withdrawing in the middle of the month, and if they are withdrawing at the end of the month, 30th April, that means April is gone, the interest will start from May, 11 months, 10, 9, and it's decreasing. If the partner is withdrawing on 31st March only, there is no interest, 0. So if you do the total of all, it comes out to be 66 months. The average is 5.5. So if you see the difference of all three, there is a difference of all three in half of a month. Beginning is 6.5, middle is 6, end is 5.5. Clear? So you don't need to make the working there. You just need to learn these things. So this page will completely finish the entire revision of interest on drawings. So if a partner is withdrawing at the beginning of the month, it is 6.5 months. If the partner is withdrawing in the middle of the month, 6 months, or आधा महीना कम कर दो at the end, 5.5 months. The next logic, if a partner withdraws in the beginning of each quarter, this is a very important concept, beginning of each quarter. What do you mean by beginning? April, May, June. Beginning मतलब 1st April. पूरे क्वार्टर का एक महीना, मतलब 1st April they are withdrawing. Then April, May, June क्वार्टर खत्म. जुलाई में फिर आते हैं 1st जुलाई को. फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में 1st जुलाई को withdraw कर लिया. Then they will withdraw on 1st October. Then they will withdraw on 1st January. So your quarter, beginning of each quarter would be 7.5 months upon 12. Now, how this 7.5 months will work? You have 12 months, right? If you want to calculate same way, you can do it. For example, if you are withdrawing it for 1st April, the interest would be applicable in April, May, and June for all months, 12, 12, 12. And in July, it will be applicable for 9 months. Are you getting it? Right? So again July, August, September, 9, 9, 9. So 3, 3 का कॉलम बनता है, इसीलिए हम इसको 12 + 3/2 कर देते हैं, एवरेज. Simple. Then July, August, September is gone. October again 6 months. November, December 6, 6. And January again 3. February, March 3, 3. So there is a slab of 3, 3 months, right? So we take total 12 months plus 3 quarters, so 3 months upon 2. So 12 plus 3, 15, 15/2, 7.5 months. So the average is gonna be 7.5 months, right? इसको भी आप कैसे याद कर सकते हो? सिंपल लॉजिक है इसके ऊपर. लॉजिक क्या है? क्वार्टर है, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 months होते हैं, ठीक है. इनका गैप कितना होना चाहिए? 3 months का एवरेज कितना होता है? 1.5 months. 3 months का एवरेज
डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1.5 महीना होता है ना. इन सब में 1.5 मंथ का गैप होता है. 7.5, 6, 4.5. राइट. अगर सेम मंथ में ही है, जैसे ऊपर देखा तो 15-15 दिन का, आधे आधे महीने का गैप था, क्योंकि एक महीने का एवरेज आधा महीना होता है और क्वार्टर का आधा 3 मंथ्स होते हैं ना. 3 डिवाइड बाय 2, इफ यू डू 1.5 मंथ्स, तो 1.5 मंथ्स का गैप है. सो इफ यू विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर इट्स 7.5. If you withdraw middle of each quarter, it's 6. And if you withdraw at the end of each quarter, it is 4.5 months. So you don't need to calculate it. इसको याद करने का सिंपल तरीका है 6.5, 6 and 5.5, आधे आधे महीने का गैप. और क्वार्टर में starts from 7.5, 6 and 4.5. सिंपल लॉजिक देखो, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर हो चाहे मिडल ऑफ एवरी मंथ हो, हमेशा क्वार्टर 6/12 ही रहता है. हमेशा आपका एवरेज 6/12 ही रहता है. ठीक है. सो व्हेन वी डू द क्वेश्चंस यू विल सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर क्या लेना चाहिए. कुछ भी गिवन नहीं है, सेम लॉजिक 6/12 लगा दो. क्लियर हुआ? That's about the interest on drawings. So this is how we have done. See, this is the calculation I've shown it here. This we generally do it in our regular classes. Okay. Now comes the first and foremost topic of partnership. First chapter is how to prepare P&L appropriation. Now, what is this P&L appropriation? I'm just going on a board to make you understand the sequence. देखो, एक फाइनल अकाउंट्स में आप क्या बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो और P&L अकाउंट बनाते हो. Trading and P&L account, these both the accounts are to calculate your income and expenses of a business. और जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं आप P&L में बुक कर देते हो. That means if you need to charge depreciation, if you need to pay off all the expenses of rental, utility, whatever, if you have interest on bank loan, ठीक है, interest on debentures, you reduce those expenses and you come to know about the net profit. In a partnership firm, this net profit is eligible. Now it is available to give it to the partners. The partners, they get the profits in any form. अगर हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो वो एक तरीका है उसको प्रॉफिट देने का. नॉर्मल एम्प्लॉइज की सैलरी देना इज योर P&L आइटम, राइट. नॉर्मल सैलरीज आपकी P&L आइटम होती है. बट अगर आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हो या पार्टनर को कमीशन दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, इट इज नॉट अ P&L आइटम. व्हाई वी से आप अपने आप को खुद को ही क्या दे रहे हो? सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो. इट इज द वे thereby you are diverting or you are dividing the profits only between the partners, and that is why it is actually called as appropriation of profits. Appropriation matlab distribution of profits. So anything other than interest on partner's loan, anything we give it to the partner is called as appropriation of profits. And anything which is actually the expense for the business, ये सब actual में expense है. These all are actually the expenses. ये सारे actual के expenses हैं जो हम कर रहे हैं बाहर वालों के लिए. And that is why these expenses are called as charge against the profit. Charge against the profits. So there is a difference between charge against the profits and appropriation of profits. Charge against the profits means the profit, the expenses which we are charging on the business to calculate the profit of the business. And appropriation means it is a way to distribute the money to the partners. A very common difference, and sometimes they may ask you in a 1 mark whether it's a appropriation or it is a charge. Okay, so P&L account and P&L appropriation में यही difference है. P&L account क्या है आपका? P&L account is actually to calculate the net profit. ठीक है. And P&L appropriation is not to calculate the net profit. It is there to show, to know how the profits have been distributed.
between partners. How profits and losses have been distributed between the partners, right? P&L में हम उसको बोलते हैं charge against the profits. Charge against the profits. And this is called as appropriation of profits, distribution of profits. Then comes, it is, क्या P&L account के लिए partnership deed चाहिए या कोई agreement चाहिए? Answer is no. P&L account is a normal as per the law. And P&L appropriation में जब आप appropriate कर रहे हो कितना salary लेना है, कितना interest on capital है, उसके लिए deed के अंदर लिखा होना चाहिए. यहाँ पे no agreement required. ये तो normal P&L account हम हर company का भी बनाते हैं, right? P&L account goes with the matching principle. मैंने कल आपको matching principle बताया था, cost and revenue, याद है? All the revenue should match against the expenses. P&L appropriation में no matching principle. A very very common difference. मैं जितनी भी चीजें आज अभी आपको बता रही हूँ, ये सब आपके 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है 1 मार्क का, उसमें आ सकता है, right? Then comes okay, now comes how to make P&L appropriation. How to make P&L appropriation. How to make P&L appropriation. P&L, after making P&L account, P&L appropriation account would be prepared. So P&L appropriation P&L के बाद बनता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट पता चल गया, तो ट्रांसफर दैट नेट प्रॉफिट टू P&L appropriation. Now see how much money we need to divide to the partners in the form of salary, commission, bonus, right? Interest on capital, whatever is given, we need to appropriate them. So interest on capital is on what? Opening capital plus whatever additions and withdrawals they have done. Salary and commission, whichever is given, we will write it. They will always mention कितना salary per month देना है या commission किसी percentage पे है. They will always give you the answer. Buy interest on drawing is an income for the firm. Interest on drawings कैसे निकलेगा? अगर कुछ भी given नहीं है, when they have withdrawn either on the first day of every month, middle of every month, end of every month, कुछ भी given नहीं है, by default हम इसको हमेशा average करेंगे 6/12. We just discussed that. Credit minus all debits would again be the available balance, and this is the net profit balances which is available to distribute in PSR ratio in the partner's capital account. Divide the profits in PSR ratio. So P&L appropriation is basically the distribution of profits in the form of various items, and the whatever balances would be left over will be divided in PSR ratio. On that basis, let's just go to the question. We'll quickly do the question. Just a second. Okay, I have shared one document in your group for today's question. So I'm starting the question number 1 on the basis of the P&L appropriation. First of all, a very important question, and may ask, if they asked you to prepare a journal, P&L appropriation, सब कुछ बनाने को बोलता है, तो 10 से 12 नंबर में भी आ सकता है, 10 to 12 marks. So let's talk about question number 1. I hope everybody has opened this. I'll just take to the board. Question has given, and they have mentioned in the question that you have to prepare what? Pass the necessary journal entries relating to appropriation out of profits. Prepare P&L account, P&L appropriation and partners capital account. बहुत काम बता रहा है करने को, देखो.
They're asking you to make everything. ठीक है, I have taken this question intentionally so that I can tell you all things in one question. So they may not ask you all questions in one, okay, all points in one. But please, as I mentioned it yesterday also, please see the requirement what they're asking. Don't just do कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन आया है चलो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी और कुछ और निकाल दिया, यू विल नॉट गेट द मार्क्स, ओके। सो क्या क्वेश्चन कहता है, देखो, X and Y started a business on 1st April 2017. They contributed 80,000 and 60,000. They contributed 80,000 and 60,000 respectively as their capital. 1st October को X granted a loan of 20,000 rupees. The terms of the partnership agreement are as follows. उन्होंने बोला है जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसका 20% हम GR में ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उसका 20% वी विल बी ट्रांसफर टू GR। अभी हमें उसके लिए प्रॉफिट्स पता होने चाहिए, शायद प्रॉफिट्स चेंज हो रहे हो, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, P&L अकाउंट। तो सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन P&L अकाउंट से स्टार्ट करूंगी। तो जो भी हमारे P&L से प्रॉफिट्स आएंगे उसका 20% पहले ही निकाल दिया जाएगा। B, interest on capital 12%, interest on drawings 10%, interest on drawings 10% पर एनम। और अगर ड्राइंग्स के बारे में कुछ दिया नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, एवरेज। X is to get a monthly salary of 2,000 rupees and Y is to get a salary of 9,000 per quarter. दोनों क्या हैं, ये B और C पॉइंट क्या है, B और C पॉइंट दोनों ही क्या है हमारे, एप्रोप्रिएशन। दिस इज ऑल्सो एप्रोप्रिएशन एंड दिस इज ऑल्सो एप्रोप्रिएशन। X is entitled to get a commission of 2% on sales, and sales were 3,50,000. Profit and losses to be shared in the ratio of their capital contribution up to 70,000 rupees. अगर प्रॉफिट 70,000 तक है तो उसका रेशो कैपिटल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। व्हाट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो, 8:6। तो अगर लेट्स से 1 लाख का प्रॉफिट आता है, आई डोंट नो कितना आएगा, अभी हम देखते हैं। अगर 1 लाख का प्रॉफिट आएगा तो उसमें से 70,000 के प्रॉफिट्स तो कौन सी रेशियो में बटेंगे, 8:6, मतलब 4:3। एंड बाकी 30,000 के प्रॉफिट्स का क्या होने वाला है, डिवाइड दैट 30,000 प्रॉफिट्स इक्वली अबव 70,000 इक्वली। तो बाकी दोनों पार्ट 1:1। आई एम गेटिंग इट, 2 रेशियोज आर हिटिंग हियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। The profit for the year ended 31st March 18 last year में before interest on partners loan was 2,600,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट इज अ चार्ज, तो वो P&L आइटम ही है। तो हमें क्यों P&L आइटम बनाने को बोल रहा है, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रॉफिट आइटम्स ऐसी हैं जो अभी तक एडजस्ट नहीं हुई। उनमें से एक एडजस्टमेंट है हमारी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की। A provision of 5% on the profit is to be made in respect of manager's commission. Manager's commission is also a charge. X and Y की drawings है 40,000 and 50,000. Pass the necessary journal entries relating to appropriation out of profit. हमें सिर्फ P&L appropriation की journal entry पास करनी है, P&L account वाली entries पास नहीं करनी है, बट हमें P&L account बनाना जरूर है, appropriation भी बनाना है, PCA भी बनाना है। So let's start with P&L account first. Journal entry में बनाना सिखा दूंगी, पहले हम क्वेश्चन P&L account से स्टार्ट करते हैं। So I'll make a P&L account first. हमारे पास P&L अकाउंट में सिर्फ 2 ही एंट्रीज थी, क्या क्या थी, एक तो इंटरेस्ट, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना था और मैनेजर को कमीशन देनी थी। एंड बिफोर दिस दे हैड अ नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट before adjustment, and there are only 2 adjustments which we have to do. How much profits do we have? We have
600. Let's give an interest on loan. 2 interest on X loan. How much is the interest on X loan? How much loan was there? They have granted 1 अक्टूबर को X ने लोन दिया है 20,000 का. X ने लोन दिया है 20,000 का. तो आप मुझे बता सकते हो कितना लोन के ऊपर अमाउंट बनता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का तो रेट ही नहीं दिया हुआ. एंड इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो कितना रेट लगता है? 6%. भूल मत जाना. तो 20,000 के ऊपर 6%. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर. 6 मंथ्स. कितना आंसर आ जाएगा? 600. एंड देयर इज अ मैनेजर्स कमीशन, तो वो भी लगा देते हैं. 2 मैनेजर्स कमीशन. हाउ मच मैनेजर्स कमीशन वी हैव? 5%. कितना आ जाएगा 5%? 10,300. सॉरी, 10,030. And now comes the net profit. Net profit to P&L appropriation. How much is that? 2,600,000 minus 600 minus 1030. It's coming 189970. 189970. We are done with P&L account. Let's make a P&L appropriation account now. P&L appropriation account. Let's go on to P&L appropriation account. यहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए है. By net profit. How much has come? 189970. उन्होंने सबसे पहले बोला है प्रॉफिट्स का 20% जीआर में डाल दो. तो सबसे पहले जीआर का ही काम कर दो. 2 जनरल रिजर्व. How much is that? 189970 into 20%. 37,994. 37,994. Now come interest on capital to IOC. How much? X and Y दोनों का. How much is the balance? 80,000 के ऊपर 12%, 9,600. Y के लिए 12%, 7,200. So it's coming to be 16,800. 2 salary X Y. X को है 2,000 per month salary, which is 24,000 every year, and Y is getting 9,000 per quarter, which is 36,000. So total is coming out to be 60,000. We are done A. B का half part. C. Coming on B का second part, interest on drawings, IOD, X and Y. How much drawings they have? They have during the year 40,000 and 50,000 का drawings. तो 40,000 के ऊपर 10% 6 months के हिसाब से, and 50,000 के ऊपर 10% for 6 months. So it's coming 2,000 and 2,500, 4,500. Then comes D. X is entitled to a commission of 2% on sales. 2% on sales. 2 commission.
x सेल्स कितनी 3,50,000, उसके ऊपर आता है 7,000. दिस इज डन. व्हाट इज लेफ्ट ओवर? ओनली द प्रॉफिट शेयरिंग. और प्रॉफिट शेयरिंग के लिए उसने क्या बोला था? 70,000 तक के प्रॉफिट्स किस में डिस्ट्रीब्यूट करो? कैपिटल कंट्रीब्यूशन में. एंड उसके ऊपर के शेयर्स, उसके ऊपर का शेयर इक्वली. तो पहले मुझे बताओ टोटल प्रॉफिट्स बनते कितने हैं? द बैलेंसिंग फिगर बिटवीन द टू. कैलकुलेट इट क्विकली. मेरे साथ साथ कैलकुलेट करना. 16,800 minus 60,000 minus 7,000. It's coming 72,676. 72,676. अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझो. 72,676. उन्होंने बोला था कि 70,000 को कैपिटल रेशियो में डिवाइड करो, which is 8:6, and on and above 70,000 it has to be divided equally. Correct? So how much is that? 40,000, 30,000. 1338, 1338. So x का बैलेंस कितना हो जाएगा? 40,000 plus 1338. This is x. And y का बैलेंस 30,000 plus 1338. So 2 profit transferred to x, y. 41338, 31338. And that's it. And that's it. आपको बोला गया था कि जर्नल एंट्री बनानी है एप्रोप्रिएशन की. आपको मालूम है सबसे इजी होती है जर्नल एंट्री बनानी. क्या करना है? फर्स्ट एंट्री हमेशा आपको लेजर अगर समझ में आता है तो आपका जर्नल एंट्री इज वेरी इजी टू मेक. कैसे? P&L appropriation to GR, always anti-clockwise. Entries are always anti-clockwise. अगर P&L की भी जर्नल एंट्री करते हो तो क्या एंट्री हो जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन. P&L अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन. P&L अकाउंट डेबिट टू P&L appropriation account. Come over here. Again anti-clockwise. IOD, interest on drawings. X interest on drawings, Y interest on drawings, to P&L appropriation. Always read anti-clockwise. P&L appropriation to GR, P&L appropriation to X interest on capital, to Y's interest on capital. P&L appropriation to X salary, to Y salary. P&L appropriation to X commission. And lastly, P&L appropriation to X capital to Y's capital. 41338, 31338, and that's it. So when you calculate, when you make a journal entry, अगर आपको P&L appropriation के उसके items याद है कि कौन सी चीज कैसे, हम subconsciously, if you understand that, you don't need to mug up the journal entry. It's completely anti-clockwise. मैं बच्चों को यही समझाती हूँ, जर्नल बनाना तो बहुत आसान होता है. Right? So whenever you get, when it's same only, P&L appropriation के जो भी एंट्री, कोई भी आपको फाइनल अकाउंट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, किसी की भी जर्नल एंट्री आ जाए, आप रीवैल अकाउंट बनाते हो, रीवैल अकाउंट की सारी एंट्रीज को उल्टा रीड करना स्टार्ट कर दो, एंटी क्लॉकवाइज पढ़ लो, आपकी जर्नल एंट्री खुद ब खुद रेडी हो जाएगी. राइट? एंड द लास्ट थिंग व्हिच दे हैव आस्क्ड यू टू मेक इट PCA. आपको PCA भी बनाना था. सो let's make a PCA account on this, partners capital account. Partners capital account. There are two partners. Two partners. X, Y. In the question it's given what is the balance of their opening capital, which is 80,000, 60,000,
फर्स्ट। अभी जो जो उनको मिल रहा है वो सब लिख दो, और जो वो दे रहे हैं वो भी लिख दो, खत्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इट्स अ गेन फॉर द पार्टनर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 9,600, 7,200. What else they are getting? X and Y are getting salaries. जो हमने P&L appropriation में डेबिट साइड जो जो X और Y को दिया वो सब पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। ऑन अ क्रेडिट साइड द कैपिटल बैलेंसेस विल इंक्रीज 24,000, 36,000। कमीशन दे रहे थे X को, बाय कमीशन 7,000। बाय P&L एप्रोप्रिएशन उनको जो प्रॉफिट्स मिल रहे थे 41,338 एंड 31,338। ड्राइंग्स मतलब उनका कैपिटल बैलेंस कम होना, डेबिट। 2 ड्राइंग्स 40,000, 50,000 and interest on drawings which is 2,000 and 2,500, and that's it. Your balance will come. What is the closing balance? It's coming 1,19,938 and 2 lakh 82,038. 82,038, and that's it. So this is about the first part of our first chapter of today, which is calculating P&L appropriation account along with the interest on capital, interest on drawings, salary, commission, and distribution of the profits. Now comes the next part of it, the next part of our today's topic, that is past adjustments. Past adjustments, 5-mark question. Past adjustments. What are past adjustments? Past adjustments मतलब कोई गलती पुराने टाइम पर हो गई, पिछली गलतियां साफ ठीक करो। कुछ करना था, हमने कुछ मिस किया या कुछ गलती करी, रेट में गलती कर दी, अमाउंट्स में गलती कर दी, and we got to know now, without opening or without correcting in our books, we are just making the adjustment between the partners. How this actually works? This is a very important and very simple concept. देखो आप simple समझना. I'll just take a simple example. ये सब छोड़ दो, कुछ भी मत सोचो. वो एक आपसे सिंपल चीज पूछ रहा है. देखो, सपोज मेरे ए और बी दो पार्टनर्स थे. ए को जो प्रॉफिट्स मिले ना, ए को प्रॉफिट्स, हमारे टोटल प्रॉफिट 50,000 के थे. ठीक है, उन्होंने जब बांटना था, उन्होंने बांट दिया 3:2 की रेशियो में. एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग, आफ्टर क्लोजिंग एवरीथिंग, सब कुछ हो गया, फिर उनको रियलाइज हुआ, ओहो ये तो गलती हो गई. पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, और साइलेंट पार्टनरशिप डीड में तो प्रॉफिट्स इक्वल बढ़ते हैं. इन दैट केस A should be getting 25,000 का profits and B should also be getting 25,000 का profits. इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसमें B को बेचारे को नुकसान हो गया because he got 5,000 less, और A मजे में because he got 5,000 more. तो पास्ट एडजस्टमेंट कहता है अकाउंट्स मत ओपन करो. हमें पता है B को कम मिला है, A को ज्यादा मिला है, तो A को सामने से बोल दो ना कि भाई तू B को दे दे, और बात खत्म करो. इसका मतलब हम अपनी एंट्रीज रेक्टिफाई कर रहे हैं. नॉट ओपनिंग द अकाउंट्स बिटवीन कैपिटल टू कैपिटल ओनली वी आर आस्किंग टू एडजस्ट, बिकॉज इन such error this is a very common phenomenon that ultimately the profit or the losses will be distributed between the partners only. तो या तो किसी पार्टनर को ज्यादा पैसा मिला होगा या किसी को कम मिला होगा, यही होगा ना. So whosoever has got more money, ask him to pay to the person who has got the less money, and do the accounting without opening the books of accounts. So in the case of past adjustments,
They don't open the accounts and make the changes. They do a rectification entry, one entry between all the partners. And to understand that, एक सिंपल चीज याद रखना, when the partner is getting something, his account would always be credited. उसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है, क्रेडिट होता है. And if partner has to pay something, his account would be debited, minus. So this is debit, this is credit, right? Why I'm telling you, because in the case of all the partnership concerns, when you calculate the partner's capital account, this plus and minus will create a lot of confusion when they calculate goodwill. Goodwill buy में लिखनी है या to में लिखनी है, आधी confusion तो यही है. तो वो हटाने के लिए मैं आपको सिंपल लॉजिक बता रही हूँ. जब पार्टनर को पैसा मिलेगा प्लस, जब पार्टनर से पैसा लेना है माइनस, क्रेडिटेड एंड डेबिटेड. On that basis, past adjustment says accounts close होने के बाद some error or omissions are noticed related to earlier year. For example, interest on capital is charged at wrong rate or not being charged, or there may be wrong profit sharing ratio. कोई भी reason हो सकता है, कोई भी reason हो सकता है. In such cases, we don't open, accounts can't be reopened. We take a net effect of such error and an adjustment entry is passed. Now to pass this adjustment entry, we make this analytical table. How we make it? As I just mentioned, there are only two coding in our accounts, debit and credit. या तो उसका balance plus हुआ होगा या minus हुआ होगा, कुछ तो हुआ ही होगा. So just take all the partners के balances and firm. Because for the firm, if it is a loss or if a firm is distributing the profits, तो firm के account में debit हुआ होगा और partners के account में credit होना चाहिए. And if it is vice versa, firm is taking, तो firm का balance credit, partners का balance debit. The basic reason is that business entity concept, separate legal entity, partners and business is different. Firm के लिए जो income है, partner के लिए expense है. फर्म के लिए जो एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए वही इनकम है. अगर फर्म पैसा बांट रही है तो पार्टनर ले रहा है. फर्म इज डेबिटिंग एंड पार्टनर इज क्रेडिटिंग इन देयर कैपिटल अकाउंट. एंड दैट इज हाउ वी मेक दिस एनालिटिकल टेबल. इट विल ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो P&L अप्रोप्रिएशन में IOC कहाँ लिखते हो? P&L अप्रोप्रिएशन में यू राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट. फर्म के बुक्स में डेबिट और PCA के बुक्स में ऐड क्रेडिट. एंड वी सी ऑल द एरर्स एंड नेट इफेक्ट उसका देख लेंगे. ऑन दैट बेसिस लेट्स डू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई हैव गिवन इट in the notes also. Question number 2. Question number 2. Question number 2. See what question says. I'm talking about question number 2 now. On 31st March, balances in the capital accounts on 31st March. Okay, this is the closing balance. Aline, Monu and Ahmed, after making adjustments for profits and drawings, मतलब closure हो गया. Closure होने के बाद उनके closed capital balances आ रहे हैं 160, 120 and 80. These are the balances. Subsequently, बाद में पता चलता है, it was discovered that the interest on capital and drawings had been omitted. उन्होंने गलती से interest on capital और drawings लगाया ही नहीं. My first question to you is, interest on capital
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से बैलेंस पे लगता है? कैन यू जस्ट क्विकली राइट इट इन अ चैट बॉक्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से बैलेंस पे लगता है? क्विकली राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से बैलेंस पे लगता है? शिवांगी हैज गिवन अ करेक्ट आंसर. गुड शिवांगी. एनीवन एल्स? परफेक्ट Kimaya. Anyone else? Very nice Myra, correct. Okay, I got 3 answers and all 3 have given a correct answer. That means you guys are attending it very nicely. Purva has also right, but Purva that's right answer, opening balance पर. और हमें यहाँ क्या दिए हुए हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं. तो पहले क्लोजिंग से कहाँ पहुंचना पड़ेगा? ओपनिंग पे पहुंचना पड़ेगा. Interest on capital has to be on the opening capital and hence we have to calculate a opening capital balance first. The profit for the year, आगे सुनो. The profit for the year was 40,000. Why they have given us? हम कैसे निकालते हैं closing capital? Opening capital, correct? Plus profits minus drawings is closing capital. अब मुझे क्लोजिंग दिया हुआ है तो आई हैव टू गो बैकवर्ड कैलकुलेशन. प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट विल बी द ओपनिंग कैपिटल. तो आईओसी निकल जाएगा. आगे बोलता है ड्यूरिंग द ईयर एलीन एंड मोनू, दो पार्टनर्स ने ईच विड्रू अ टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. 24,000 रुपीज इक्वल निकाले हैं, मतलब एवरी मंथ 2,000 रुपीज in the beginning of each month. Why they have given you this information? Because interest on drawings, अगर कुछ given नहीं होता तो average लेते हैं, अगर given होता है तो we have to take it on that basis. जैसे beginning of each month है तो क्या लिया जाएगा? Quickly tell me. 6.5, 6 और 5.5. क्या डिवाइड बाय 12 कौन से अमाउंट से किया जाएगा? 6.5, 6 और 5.5. टेल मी द आंसर. क्विकली लिखो, चैट पे लिखो. ओके, गुड शिवांगी, वेरी गुड, परफेक्ट. That's right, Kimaya. That's right, Myra. Good. Good, guys. Yes, Hussein, that's the right answer. 6.5 months. That's right, 6.5. Yes, Purva, that's the correct answer. 6.5 divided by 12. Perfect. And Ahmad withdrew a total sum of 48,000 rupees in equal installments at the end of each month. Which rate now? Which rate now at the end of each month? Perfect. 5.5 months. Perfect. 6.5, 6 and 5.5. Very good. You guys are so quick. Good. The interest on drawings was to be charged at 5% per annum. तो हमने देख लिया, दो पार्टनर्स को 6.5 लेना है और लास्ट पार्टनर को 5.5 लेना है. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was to be allowed at 20% per annum, जो हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे. The profit sharing ratio was 2:1:1. Show your working notes clearly. Which working note they're talking about? This analytical table. Pass the necessary rectifying entry. So let's make this working note first of all. Table बनाते हैं, उसी से ही आपको सब clear हो जाएगा. So I'm making that analytical table. Three partners: one, Aline, Monu, Ahmed, and Firm. Aline, Monu, Ahmed, Firm. Debit, credit. The first thing, IOC, interest on capital. तो interest on capital के लिए let's do working note number 1.
Working note number 1. Ahmed. The closing capital which is given to us, is 1,60,000, 1,20,000 and 80,000. Plus drawings opening निकालने के लिए they have withdraw equal 24,000 total money. Monu has also withdrawn 24,000 and Ahmed is 48,000. Minus profits जो already credit हो चुके थे, which is in the ratio of 2:1:1. Minus करके देख लो. 2:1:1. And there comes the opening capital. Opening capital. What is opening capital? 1,64,000, 1,34,000 and 1,18,000. Now we can calculate interest on capital on it, which is at the rate of 10%, 16,400, 13,400 and 11,800. It's given in the question. Interest on capital is the income for the partner and expense for the firm. और income है मतलब यहाँ add 16,400, 13,400, 11,800. The total is the expense for the firm, which is coming out to be 41,600. Anyone has a doubt in this entry? Please raise your hand if anybody has a doubt in this entry. All clear? Shall I move ahead? Yeah, Purva, tell me. Okay. No, I have no doubt. Okay, correct. Then let's talk about interest on drawings. Interest on drawings. Working note number 2. Working note number 2. Interest on drawings. Again, same way, Aline, Monu and Ahmed. What is the amount of the drawings? It's already given to us, 24,000, 24,000 and 48,000. Interest on drawings is eligible for 5 months, 5%, which is 24,000 into 5 upon 100 into 6.5 months. 24,000 into 5% into 6.5 months, as it is first of every month, and 48,000 into 5% into 5.5 months, as it is at the end of the month. So the amount is coming 650, 1,100. So we got IOD. Interest on drawings is an expense for the firm, income for the business. Income for the business. So let's talk about Aline, Monu and Ahmed has a expense 650, 650 and 1,100, and firm has a gain on 2,400. Done. We are done with the question, you know. हमें सिर्फ क्या निकालना है लास्ट में. अभी देखो फॉर्म पर आ जाओ. अभी फॉर्म के बारे में सोचो. फॉर्म का डेबिट 41,600 का है और फॉर्म का क्रेडिट है
2400 का, there is a loss. Debit is more than credit, there is a loss. How much loss do we have? There is a loss. We have a loss of 39,200. We have a loss of 39,200. It's written on our credit side because debit is more than credit. Loss है ना. अगर ये मेरा loss है, who will bear this loss? Partners will bear this loss. Same ratio. 2:1:1. If it is in a credit side, now loss will be written on a debit side. So 39,200 divided into 2:1 ratio, which is coming 19,600. 19,600, 9,800, 9,800. $9,800. Now total, just write the total of all debit and credit. It's the total is coming 20,250, 16,400, 16,400, 10,450, 13,400, 10,900, 11,800. It's not an account. You don't need to balance it. Okay. 41,600. It's an analytical table. We are just finding out the rectifying entry. Okay. देखो आपकी एंट्री यहीं से निकल के आएगी. Which on in Aline's capital, in Aline's account, which account is more heavy? Debit side is heavy. How much? 3850 debit. I am not writing the balancing figure on a shorter side. मैं ये देख रही हूँ कौन सी heavy side है, बस वही debit करना है. Similarly, on in Monu's capital, which side is heavier? Credit. कितने से? 2950. अहमद के यहाँ पर कौन से बैलेंस हेवियर है? क्रेडिट साइड. 900. देखो एंट्री बन गई. व्हाट एंट्री आई हैव पास्ड? एलिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 3850 to Monu's capital 2950 to Ahmed's capital 900. And that's it. Have you got it? Is it clear? Is it clear? So if you talk about past adjustments, please make this analytical table. Wherever if you find it okay, profit गलत distribute कर दिया तो कोई बात नहीं, जो distribution हुआ है उसको पहले reverse कर दो, फर्म को credit बाकी सबको debit उनसे वापस ले लो और फिर उसको नई रेशियो में डिवाइड कर दो. See the difference? वो difference जो भी आएगा डिवाइड कर दो. सिंपल. आपको एनालिटिकल टेबल के अंदर बार बार जो रेक्टिफाई एंट्री पास नहीं करनी. देयर वुड बी ओनली वन इफेक्ट ऑफ द रेक्टिफिकेशन एंट्री लाइक दिस. This is not an account. You don't need to make a balancing figure. Whichever account is heavier, that is the amount which you need to write it. Clear now? So this is the second part of our first chapter, which is on the basis of past adjustments. Till here, any point which you want me to add in through module or any other questions which you have seen and it's not understood? Anyone? Okay. The last part of this chapter is guarantee. Guarantee. I'm just moving on to the last part of this chapter, guarantee. Guarantee of profits. I hope it will be clear to you after this session because this is one of a very critical thing. बच्चों को कभी समझ नहीं आता कौन सी रेशियो में, कभी एक पार्टनर ले रहा है, कभी दो पार्टनर ले रहे हैं, कभी
सभी पार्टनर्स ले रहे हैं. लेट्स डिवाइड द गारंटी ऑफ प्रॉफिट इनटू 3 पार्ट्स. मेक इट अ वेरी सिंपल. गारंटी मतलब क्या होता है? व्हेन अ वन पार्टनर इज गेटिंग दैट दिस मच मिनिमम प्रॉफिट्स, ही विल बी गेटिंग इट फ्रॉम द बिजनेस. Either all other partners would be contributing or one partner has a very strong relationship with the partner. तुझे तो पैसा मैं ही दे दूंगा. So if one new partner says that okay, I am coming, but there is a minimum guarantee that I will be getting 1 lakh profits every year, मैं उस पर sacrifice नहीं करूंगा. So if other partners are collectively asking, okay, हम तुम्हें मिलके 1 लाख रुपए दे देंगे, हम अपना profit sacrifice करने के लिए ready हैं, so that you will get the full money which you are asking for, that is called as guarantee of profits. Now it can happen that the partner is getting the minimum profits, the guaranteed profits by all remaining partners. Suppose 3 partners hai, one partner is the guarantee partner, the other 2 partners in the ratio, whichever agreed ratio they have, they will give the money to the guaranteed partner. Second, if it is guaranteed by one or more existing partners, old partners, or it is guaranteed by the firm. Now, what is the difference between the remaining partners and firm? I'll come on that each and every point. The first thing, guarantee by all remaining partners. The first topic, guarantee by all remaining partners. I have taken a very small examples to make you clear about all these topics, right? Guarantee by all remaining partners. First of all, for example, to understand this, I'm not talking anything about theory, मैं सीधा example पे ही jump कर रही हूँ. Let's say PQ already partners थे. R is coming for a new partnership for 1/8 share. And he's saying, I will be coming, but I need a guaranteed profits of 75,000, which P and Q agreed, ठीक है, हम तुम्हें ये 75,000 rupees देंगे. And if there is any deficiency, we will bear that deficiency in 3:2 ratio. In 3:2 ratio. And after adding him 1/8 share, of course, the profit sharing ratio will change. Profit sharing ratio will change. How? If R is getting 1/8 share, the remaining share remains 7/8. 8 share में 8 shares में से 1 share अगर R ले रहा है, तो कितने shares बच गए? 7. 7/8 share is the remaining share. So 7/8 shares will be divided between P and Q. So 7/8 का 5/8. 7/8 का 3/8. The new ratio will come in. The new ratio is coming 35:21:8. We will do this again in addition chapter. Now, if profit is 4 lakh, that 4 lakh will be divided between 3 partners. Which ratio? 35:21:8. Right? So how much money they will be distributing between themselves? It's coming 218,750. P will be getting, Q will be getting 131250, and R will be getting only 50,000. और उसकी गारंटी क्या थी? I want 75,000 in my kitty. अब उस बेचारे को 75 देने के लिए 25,000 who will give? Who will give 25,000? P and Q will give, because they agreed that we will give you the remaining money. Which ratio? 3:2 ratio. तो ये 25,000 का 3:2 देखोगे तो P will give 15,000 and Q will give 10,000. तो उन बेचारों के अपने प्रॉफिट शेयर्स का प्रॉफिट कम हो जाएगा और R का 25,000 से ऐड हो जाएगा. And this is where 218,750 minus 15,000, 131250 minus 10,000, और वो 25,000 रुपए वो R को देंगे, so that he will get 75,000 in his balance. ऐसे केस के अंदर PSR मेंटेन नहीं होती. 35:21:8 can't be maintained because of the guarantee of the partners. So they say, देखो हम तुम्हें दे रहे हैं, जो भी डेफिशिएंसी है गारंटी पार्टनर से डायरेक्ट ले लो. तो P and Q will be given to R. तो क्या एंट्री पास हो जाएगी? P Q to R.
Who will be getting the money? R will be getting. तो उसका कैपिटल बैलेंस बढ़ गया, मतलब क्रेडिट हो गया, तो एंट्री हो जाएगी P's अकाउंट डेबिट, Q's अकाउंट डेबिट टू R's अकाउंट, right? That is the case when the guarantee is given by all remaining partners. Okay. Now comes guarantee by one or more partner. Guarantee by one or more partner. Now, if in such case guarantee by all partners means बाकी सारे partners ने guarantee दे दी, one or more partner मतलब शायद एक partner दे रहा हो या चार partners हैं तो चार में से दो partners ने guarantee दे दी, anything can doable. Let's take a simple example. A, B, C, 3:2:1 ratio. C has a guarantee by B only. Only B has given a guarantee that you will get a 15,000 rupees as profits. You will get 15,000 rupees as profit. Profit हुए 1 लाख के, प्रॉफिट हुए 1 लाख के, ठीक है, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 lakh will be divided between 3:2:1, so 1 lakh divided by 6 into 3, it's coming 50,000, 33, 6667, 16,667. गारंटी बी ने कितने की ली थी, 15,000 की, ये तो फुलफिल हो गई, दिस इज फुलफिल्ड. बी ने 15,000 बोला था, उसको 16,667 मिल रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ तो सब उसका सही चलेगा. बट द पॉइंट कम्स हियर, अगर सपोज बी ने गारंटी दी है, बी गारंटीड फॉर 20,000 रुपीज की, तुम्हें 20,000 रुपया मिलना चाहिए. मिल कितना रहा है, 50,000 ए को, 33,333 बी को एंड 16,667 सी को, ठीक है. अगर बी ने गारंटी दी है, कितना पैसा उसको मिलना चाहिए, 20,000. हाउ मच डेफिशिएंसी ही हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ 333. हु विल गिव दिस मनी नाउ, ओनली बी विल गिव दिस मनी, 30,000. B will be giving a guarantee and B will give this money to C. तो एंट्री क्या हो जाएगी, B to C. इतने की डेफिशिएंसी थी, सिंपल. So whenever we have a guarantee of one or more partners, we will always need to understand how many partners are there. अगर चार में से दो partners दे रहे हैं तो थर्ड पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है, वो कहेगा मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन 1 and 2? यस. अगर सारे पार्टनर्स गारंटी नहीं दे रहे हैं तो पॉइंट नंबर 2 लाई कर जाता है, ठीक है. देन कम गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर. guarantee by a firm to a partner, a very important topic. Guarantee by a firm to a partner. What does that mean? Is there any difference remaining partners and firm? Answer is yes. To understand that, there are some 4 situations which will come under a firm guarantee. There can be the following situation. क्या क्या? Profit is adequate, profits available हैं, and profit share is more than the guaranteed profit. पहला केस, प्रॉफिट्स भी है और जिसको गारंटी दी है ऑलरेडी वो गारंटी से ज्यादा पैसा ले रहा है, तो एडजस्टमेंट की तो जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी उसका सब सेट है. नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड. प्रॉफिट इज एडिक्वेट एंड प्रॉफिट शेयर इज रिड्यूस्ड. अब इसमें उसका प्रॉफिट अच्छा है, मतलब अवेलेबल है, फर्म में प्रॉफिट्स हैं, बट उसका खुद का जो प्रॉफिट शेयरिंग आया वो गारंटी से नीचे आया है, यहाँ पर एडजस्टमेंट की जरूरत है, वो हम सीखेंगे. प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, प्रॉफिट्स ही पूरे नहीं है, गारंटी वाले भी प्रॉफिट्स टोटल ही नहीं है. एंड फोर्थ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर है ही लॉसेस तो क्या करेगा बेचारा. तो गारंटी प्रॉफिट में तो लॉसेस हो रहे हैं तो प्रॉफिट तो है ही नहीं, क्या उसको अपना गारंटी प्रॉफिट मिलेगा? आंसर इज यस. अगर प्रॉफिट्स हैं ही नहीं, लॉसेस हैं, स्टिल ही विल गेट द मनी. अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. तो हमें यहाँ पर अगर गारंटी फर्म ने दी हो तो हमें वहां पे 3 केसेस पढ़ने पड़ेंगे. प्रॉफिट एडिक्वेट है,
बट उसका शेयर उसको बराबर नहीं मिल रहा, उतना अमाउंट नहीं मिल रहा, प्रॉफिट ही इनएडिक्वेट है, कम है, और प्रॉफिट नहीं है ही लॉसेस। तो ये तीनों सिचुएशंस हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट सिचुएशन is not no adjustment is required, it's a very simple one. Case B, profits are adequate but profits are reduced, share is reduced. Let's take a simple example. I have given a very simple example over here. तीन partners हैं, ठीक है, तीन partners हैं. I'll just go on a board to make you understand this. Suppose three partners हैं X, Y and Z. Their profit sharing ratio is equal. Okay. And Y has a minimum guarantee. Y has a minimum guarantee. Minimum guarantee. Minimum guarantee कितनी है? That he will have a profits of 1 lakh. He will have a profits of 1 lakh. और उसको सैलरी भी मिलती है, सैलरी उसकी है 5,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। और ओवरऑल नेट प्रॉफिट्स हैं फर्म के, नेट प्रॉफिट्स हैं फर्म के 3,30,000. प्रॉफिट इज एडिक्वेट 3,30,000, मिनिमम गारंटी 1 लाख है, प्रॉफिट इज एडिक्वेट, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है. हाउ? लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल वर्किंग. भारत सॉरी वाई को गारंटी है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की, और उसको सैलरी मिल रही है 5,000 पर मंथ, करेक्ट. तो अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जाऊंगी, if I'll make a P&L appropriation account, how this will look like? I'll say buy net profit कितना 330, 3,30,000. भरत सॉरी Y की सैलरी is how much? 5,000 per month, which is 60,000. And now coming on the profit. How much profit would be distributed between all 330 minus 60,000? 270. This is availability, and 270 will be divided between all three partners. How much is there for all three partners? If you see X, Y and Z, if you distribute this 2,70,000, every partner will get 90, 90 and 90. Y has a guarantee of 1 lakh rupees. He should get 10,000. Who will give this 10,000? X and Z. 5,000 X देगा, 5,000 Z देगा. इस कंडीशन, इस सिचुएशन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है with the case 1 when the guarantee is given by remaining partners. सेम है केस, सेम है. तो हम इसको अलग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि फर्म के केस में ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट से इनएडिक्वेट हो या लॉसेस हो, इसीलिए हम फर्म वर्ड यूज करते हैं. But if the guarantee is given by the remaining partner and if the profits are adequate, this is the same situation. So in that case, X will get 85,000, Y will get his entirely intact 1 lakh rupees, and Z will get also 85,000. So this case and case 1 case is same. There is no change. There is no change. Right? Clear हुआ? So I have divided the guarantee by firm situation into 4 parts. 1, profits adequate है, share भी उसको properly मिल रहा है, no adjustment required. Second, profits adequate है but उसका share उसको कम मिल रहा है, तो remaining partners अपना अपना हिस्सा देंगे, ठीक है. Then comes the third section. अगर profit, third situation जहाँ पे profit से inadequate है, जहाँ पे profits ही inadequate है, वहां क्या करेंगे? Let's come on to that situation. Profits are inadequate. Profits are inadequate. जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, A, B, C 3 पार्टनर्स है, 2:2:1 रेशियो. A के पास गारंटी है that A will get minimum 80,000 rupees profits. बट प्रॉफिट से फर्म के 50,000 हुए, प्रॉफिट ही 50,000 हुए, प्रॉफिट्स कम हुए हैं.
उसको खाली ए को ही 80,000 रुपीज देने हैं, बट फर्म ने कमाया ही कम है, तो प्रॉफिट ही कम है, क्या करेंगे? वो कहते हैं नहीं जी, मैं तो 80,000 लेके रहूंगा। मतलब फर्म के पास 30,000 रुपीज कमाई ही कम है, तो क्या वो छोड़ देगा? आंसर इज नो। दिस 30,000 would be a loss. Who will bear this loss? B and C will bear. बेचारे B और C को एक भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट दे आर ब्रिंगिंग दिस मनी इन, ये लॉस कौन बेयर करेगा? बी और सी बेयर करेंगे। तो नेट प्रॉफिट आए 50,000 के, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज 80 माइनस 50, 30,000 का लॉस है। हु विल बेयर दिस लॉस? बी एंड सी। इन विच रेशियो? 2:1 रेशियो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट concept, right? So when we are talking about the entries, when you see the entries in inadequacy, the loss would be bear by the remaining partners. But guaranteed profit, the person, the partner who has got the guarantee that I need this money, उसको पूरा पैसा मिलना चाहिए। इसका मतलब बी और सी अपने घर से पैसा लाके इसको दे रहे हैं। So it can be possibility if the profits are inadequate. Right? आगे बढ़े। The last part, when there are losses, if the firm has losses, तो क्या होगा? X, Y, Z 6:4:1 रेशियो। Z के पास गारंटी है that Z will get a minimum 2 लाख के प्रॉफिट, बट बेचारे फर्म के पास तो लॉस है 22 लाख का, 22 lakhs का लॉस है। तो P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले 22 लाख के लॉस को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। if you divide this 22 lakh in 6:4:1 ratio, it becomes 12 lakh, 8 lakh, 2 lakh। Z के हिस्से में भी लॉस आया, तो Z के हिस्से में लॉस आया होगा 2 लाख का, और उसको तो प्रॉफिट मिलना चाहिए था 2 लाख। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है? Z should not bear the loss। पहले तो इस लॉस को क्या करेंगे? X और Y बेचारे गुड करेंगे, इसको पहले 2 लाख के माइनस को प्लस में लाएंगे, और उसके बाद Z को 2 लाख रुपए अपनी जेब से और देंगे। सो टोटल X and Y both are bearing how much money? 4 लाख रुपीज। एक तो Z का लॉस, और लॉस बेयर करने के बाद Z को भी 2 लाख रुपया देना है, तो total 4 lakh rupees X and Y will give. In which ratio? 6:1 ratio. Please understand, I repeat, this is a very important concept. If the firm has losses, you cannot divide only this 22 lakh rupees into 6:4 ratio. This is wrong. As a presentation, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये लॉस XYZ ने बेयर किया है। क्यों ऐसा? क्योंकि X और Y खुद ओवर एंड अबव डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एंट्रीज करते हैं, इफेक्ट, नेट इफेक्ट आता है। तो XYZ के लॉसेस आ रहे हैं 12, 8 and 2। Z इज बियरिंग 2 लाख का लॉस। Z बोलेगा मैंने तो लॉस की बात ही नहीं कर रही थी, आई शुड हैव 2 लाख का प्रॉफिट, तो पहले ये लॉस तुम लोग बेयर करो, कम एट 0, और उसके ऊपर 2 लाख रुपए मुझे और दो। सो टोटल X and Y वुड बी गिविंग 4 लाख रुपीज टू Z। उसमें से 4 लाख में से 2 लाख लॉस का सेट ऑफ हो जाएगा, बचे 2 लाख, वो तो उसको मिनिमम गारंटी दी हुई थी। इन विच रेशियो? जो हमें दी हुई है 3:2, 6:4 रेशियो, 6:4 रेशियो। So this is the last entry of the guarantee. So I divide the guarantee into 3 parts: by remaining partners, by one partner, or by the firm। रिमेनिंग पार्टनर्स एंड बाय द फर्म में इनएडिक्वेट उसको पैसा मिला है, तो केस सेम बनता है। जो भी डेफिशिएंसी है बाकी पार्टनर्स अग्रीड रेशो में
या जो भी रेशो वहाँ दी होगी उसमें बांट दिया जाएगा। प्रॉब्लम आएगी अगर फर्म के पास प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है, तो जितनी भी डेफिशिएंसी है प्रॉफिट्स में रिमेनिंग पार्टनर्स विल बेयर। और अगर फर्म के हैं ही लॉसेस, तो पहले लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करो, जस्ट सी लॉस कितना किटी में उनके आ रहा है, एंड देन पुट द मनी इनटू द गारंटिंग प्रॉफिट्स। तो 2 लॉस, 2 उसको जो गारंटी दी हुई है, 2 + 2 4 लाख रुपीज उसको देने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? So here we are finishing the guarantee of profits chapter. In this introduction to partnership deed के बारे में हमने first discuss किया. Then we discussed about the adjustment of interest on capital, interest on drawings, salary, bonus, commission. Then we moved to P&L appropriation account. We divide whatever money we are giving it to the partners is an appropriation of profit except interest on partners loan. P&L appropriation बनाने के बाद we have seen the rectification of errors, which is again a past adjustments. One rectifying entry would be passed, and lastly we talk about the guarantee of profits. And here our part 1 chapter would be over of partnership account. Any doubt, any point you want me to add in till here? Anyone? Okay. So let's move on to the next part of it, which is goodwill. Okay, so let's talk about goodwill. Goodwill. Just a second. Let's talk about goodwill. Goodwill, what is goodwill? It's sometimes, this is the one thing which can be only happening when there is a change in relationship. When there's a change in the reconstitution, when we find any changes in the partnership form, only then this goodwill would be calculated. I'll be talking about in every admission and in retirement goodwill के aspects में बार-बार रिवाइज करवाऊंगी adjustments में. बट अभी मैं जो बात कर रही हूँ गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज दे मे आस्क द क्वेश्चन टू कैलकुलेट ओनली द वैल्यू ऑफ द गुडविल. ठीक है, तो देयर आर सम मेथड्स ऑन व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. Goodwill is an intangible asset which is earned due to reputation, and companies have a capacity to earn higher profits. Firms earn higher profits if they have a good reputation. It is an intangible asset, as we know. It helps in earning higher profits. The value of the good is subjective assessment of value. It's a subjective matter. You need to understand how you are calculating it. It does not have an existing separate from business, and it is an attractive force to get more customers. So it's all subjective, nothing related to us. Why we are doing the valuation for the goodwill? The first is if there is a change in profit sharing ratio, if there is an admission, if there is a retirement or death, if there is an amalgamation, one partnership firm is acquiring by the another partnership firm, or if the firm is being sold. Let's take a simple example. When, let's say I have a house, ठीक है, मेरे पास एक फ्लैट है जिसमें मैं रहती हूँ, ठीक है, I stay in that house. I converted that house into my home. I don't have an intention only to sell that house. जब तक आपकी इंटेंशन बेचने की नहीं होती, आप उसकी वैल्यू भी नहीं लगाते. क्या मैं डेली जाके ब्रोकर को फोन करके पूछूंगी, अरे आज बता आज मेरे घर की वैल्यू कितनी? नहीं.
whenever I have an intention to sell that property, only then I will go to the broker or the agent to ask, अरे बताओ इस एरिया का क्या रेट चल रहा है। इसका मतलब हम अपने घर की जगह घर की वैल्यू तब लगाते हैं जब आपको उसे बेचना हो। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज विद द गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन तब होती है जब फर्म के अंदर कोई चेंज हो रहा हो, ठीक है, जब फर्म के अंदर कुछ चेंज हो रहा हो। एंड टू कैलकुलेट दिस, there is some goodwill which is self-generated. What do you mean by self-generated? Will come on that. And there is some goodwill which is a purchased goodwill. सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब जो आपने मेहनत करके खून पसीने से खुद बनाई है, रेपुटेशन खुद बनाई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। लेकिन अगर बिजनेस के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले से आप पैसा कैसे मांगोगे। And you may buy the goodwill. It generally happens when you acquire the firm, when you sell or when you buy any firm. तो सामने वाला कभी भी सिर्फ स्टॉक के लिए या अपने एम्प्लॉइज के लिए या अपना जगह का पैसा नहीं मांगता। वो ये भी बोलता है, सर मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने यहाँ पे काम नाम बनाया है, आप वही अब आप कमाओगे, उतना ही पैसा अब आप कमाने वाले हो। इफ यू आर बाइंग दैट बिजनेस, तो उसके नाम का वो गुडविल ले लेते हैं, उसके नाम का वो पैसा अरेंज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ परचेज गुडविल। हाउ यू कैलकुलेट इट? Let's talk about purchased goodwill first. बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, और इसी में ना हिडन गुडविल का भी पॉइंट मैं कवर करूंगी। सपोज A and B, A has acquired B कंपनी, B फर्म, और B के पास क्या थे, एसेट्स थे 20 लाख के और लाइबिलिटी थी 12 लाख की। तो अगर आप नेट एसेट्स देखो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करो तो कितना बनता है, 8 लाख रुपीज बनता है। लेकिन बी ने कोटेशन किया कि सर मैं आपको ये बिजनेस 10 लाख में बेचूंगा। व्हाई ही इज आस्किंग फॉर मोर मनी? ही हैज 20 लाख के एसेट्स, 12 लाख की लायबिलिटी, तो नेट एसेट्स तो 8 लाख के बनते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बट इज आस्किंग मोर मनी, व्हाई? बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन। ही इज आस्किंग द मोर मनी विच इज कॉल्ड एज गुडविल। सिंपल। एडमिशन में काम आएगा। एडमिशन में हिडन गुडविल का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम उनको बोलते हैं कैपिटल इतना लाना नहीं है, ज्यादा लेके आओ। तुम्हारे शेयर के हिसाब से बनता 1 लाख है, बट तुम्हें लाना पड़ेगा 1.5 लाख। हम उससे ज्यादा पैसा मंगवा रहे हैं, उसके शेयर से अभी ज्यादा, 50,000। व्हाई वी आर आस्किंग हिम टू पे मोर? इट इज अ हिडन गुडविल। आई विल डू दैट वन एग्जाम्पल, अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, ठीक है। सो परचेज गुडविल के अंदर एसेट्स और जितना पैसा हम उससे मांग रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द गुडविल। ओके, नाउ कम्स द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आपकी खुद की बनाई हुई गुडविल की वैल्यू तब तक आप नहीं निकाल सकते जब तक पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ रिलेशनशिप चेंज नहीं होना। हमें जरूरत नहीं है ना रनिंग बिजनेस के लिए क्या गुडविल निकालनी। When there is a change, then we need to calculate it, and again we are dividing. There are some methods to calculate that goodwill. There are some methods, and there are 3 methods to calculate goodwill. One method is called as average profit method, super profit method second, and method number 3 is capitalization method. That capitalization method is further divided into average profit and super profit method. Right, so first of all, I'll talk about the average profit method. What is average profit method? Suppose एक लगा लगाया बिजनेस बिका, ठीक है, एक लगा लगाया बिजनेस बिका। वो कहता है कि सर मेरी पूरी शॉप एकदम सेट है, मेरे एम्प्लॉयज ट्रेंड हैं, मेरा पूरा स्टॉक लगा हुआ है, आपको मैं सारी लिस्ट दे रहा हूँ कस्टमर की, वेंडर्स की, जहाँ से मेरा माल आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, सब रेडी है। तो उसके बदले में मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एसेट्स दे रहा हूँ, जगह दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। तो मेरे नेट एसेट्स की जो वैल्यूएशन आई वो 2 करोड़ आई, बट वो हमसे ना 3 करोड़ रुपया मांग रहा है। उसका जो आस्क है, मतलब जो उसका कंसिडरेशन है वो 3 करोड़ है। वो ज्यादा पैसा मांग रहा है हमसे। वो क्यों ज्यादा पैसा मांग रहा है? वो कह रहा है सर मैं आपको लगा लगाया दे रहा हूँ, एम्प्लॉयज को भी ट्रेंड दे रहा हूँ, आप अगर बिजनेस एज इट इज मेरे तरीके से ऐसे भी चलाओगे ना तो भी आपको इतना प्रॉफिट अगले 3 साल में, तो आप इतने ही प्रॉफिट ऐसे ही कमाते चले जाओगे। कुछ भी नहीं करना, आप कुछ मत करो,
जिस तरीके से the business is going on, the business which is going on, in the same manner, if you run the business, you will get at least same profit, same average profit for next 3 or 4 years. So they say, sir, you are going to earn the same profits for next 3-4 years. Please give me the goodwill ka amount on that 3-4 years. So in that method, they say average profit into number of year purchase. Number of year purchase means for how many years the same profit the new vendor or the new partnership firm will earn. That is a number of year purchase. For the question point of view, it will be always given in to us. We don't need to calculate number of year purchase. हमेशा हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा. एवरेज प्रॉफिट्स मतलब कौन से प्रॉफिट्स? एवरेज प्रॉफिट मतलब नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट्स. If there is any abnormal gain or supernormal gain or abnormal losses during any year, we are not talking about that. If the firm had sold a very massive asset and they're earning unusual or any, we call it as actually, short gains, or you have a wind gains, मतलब एकदम एक बार gain हो गया. वो गेन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं. So don't consider abnormal losses and abnormal gains. Take a normal, which is called as a future maintainable profits. आप इस टाइप के बिजनेस में फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स कमा सकते हो, उसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स बोलते हैं, FMP. ओके, जितना कमाओगे उसका एवरेज ले लो और multiply by number of year purchase. These are the kind of the average profits which you are going to earn same for the next few years. So average profit method is equal to goodwill. How you calculate goodwill? Average profit into number of year purchase. Average profit कैसे निकाला जाएगा? Business profits normal, normal business profit मतलब excluding abnormal gain and losses upon number of years. What do you mean by normal business profit? It's actually a future maintainable profits. FMP बोलते हैं इसको. Future maintainable profits. How you calculate it? Profit and loss जो भी आपको दिया जाएगा, nullify the effect of abnormal losses and abnormal gains. Abnormal losses add back, abnormal gains minus, हटा दो, and make it a adjusted business profits. Divide by number of years. If I'm talking about the super profit method, I'll come out later. पहले हम average profit के बारे में ही बात करते हैं. Let's talk about the average profit method first. Question number 1 of your notes, which I have shared it with you. We are starting with the goodwill chapter. I'm talking about the question number 1 on average profit method. I'm taking this on the board. Question number 1 of our goodwill. A and B are the partners sharing profits equally. Sharing profits equally. They admit C into partnership for equal share. C is coming. And goodwill was agreed to value at 2-year purchase. 2-year purchase means number of year purchase of average profit of last 4 years. Or profits for the last 4 years is given. Profit is a silent word for losses. ठीक है? ऐसा नहीं है हम losses को ignore करते हैं. We will take into consideration losses also. They have given the 4 years के profit. The books of the account revealed as follows. सबसे पहले the question comes here on the basis of average profit.
method. How we calculate goodwill? Goodwill is equal to average profit into number of year purchase. What is average profit? Average profit मतलब adjusted profit, future maintainable profit. How you calculate that? We will take adjusted profits upon number of years. और हमें एडजस्टेड प्रॉफिट से निकालने आने चाहिए. हमें 4 इयर्स के दिए हुए हैं 2014, 15, 16 and 17. What are the profits which is given to us? 70,000 for 14, 1 lakh for 15, 55,000 for 16 and 1,45,000 for 17. 55,000 is a loss. I have written it in the brackets. The books of accounts revealed that the firm had an abnormal gain. Gain है abnormal gain. तो क्या करना पड़ेगा? Nullify minus abnormal gain. Which year? 14. तो minus कर दो 10,000. Abnormal gain minus कर दो 10,000. Then the firm incurred abnormal loss. The firm incurred abnormal loss. Which year? 2015. तो abnormal loss को भी nullify कर देंगे. Abnormal loss 2015, 20,000 add back. 20,000 add back. Repairs to car 15 was wrongly debited to vehicles on 1st May 15. उन्होंने गलती की थी वो रिपेयर्स कौन सी डेट की? 15, 1st May 15. 1st May 15 मतलब विच ईयर इट इज गोइंग टू अफेक्ट. अगर वो रिपेयर्स होती तो रिपेयर इज एन एक्सपेंस, मेरे P&L अकाउंट में से माइनस होना चाहिए था. विच ईयर? 2015 1st May को हुई है. तो कौन से ईयर? 2016. 2016 एंड हो गया 15-16 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से. तो हमारे जो रिपेयर्स हैं वो क्या होने चाहिए थे? डेबिट. रिपेयर्स क्या होने चाहिए थे? डेबिट होने चाहिए थे. कितने से? 50,000 से. ये कम होने चाहिए थे. उन लोगों ने गलती से उसको क्या डाल दिया? व्हीकल में डाल दिया. तो 1st May 15 को अगर उसको उन्होंने व्हीकल्स में डाल दिया है विच इज ऑफ 50,000, तो फिर तो पक्की बात है 15-16 के लिए उन्होंने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लिया होगा. कितना? They have calculated a depreciation on SLM basis at the rate of 10%. So 50,000 for 10%, 5,000. Right? 5,000. 10% per annum नहीं है. It is just written 10%. Please keep a note. Final accounts में ये बड़ा common point है. अगर जब तक per annum नहीं लिखा हुआ आप अपने आप से नहीं मानेंगे. 10% मतलब सीधा राइट ऑफ. तो उन्होंने 5,000 रुपए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा. 45,000. क्लियर है? इज इट क्लियर गाइस? 45,000 वैल्यू आ गई. ये कभी की कहानी है. 15-16 में लगाया तो 16-17 का भी डेप्रिसिएशन उन्होंने क्लेम कर लिया. कितना? 5,000. अगेन 5,000. दिस 10% ऑन 1st May, तो डेप्रिसिएशन लगा. इस पर भी 5,000, तो इट बिकम्स 40,000. करेक्ट है? तो अगर मेरा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, डेप्रिसिएशन मेरा गलत माइनस हुआ है, तो मुझे डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक 5,000, ऐड बैक 5,000, ऐड बैक. Right? So when the question says, when the question is talking about the effect, nullify the effect of any abnormality, any gain or any loss, any error,
प्लीज करेक्टेड। रिपेयर थे वो, रिपेयर को माइनस होना चाहिए था, और गलती से उन्होंने जो डेप्रिसिएशन माइनस किए हुए हैं वो मैंने ऐड बैक कर दिए। सो नाउ माय एडजस्टेड प्रॉफिट इज कमिंग 60,000, 1,20,000, 1 लाख लॉस। लॉस बढ़ गया, कोई बात नहीं, रिपेयर की वजह से बढ़ा, एंड 1,40,000। Now, what is the average profit total of all? 60 plus 120 plus 140 minus 1 lakh. It's coming 2,20,000. For how many years? 4 years. 55,000 is my average profit. 55,000 is the average profit. What is the number of year purchase? 2. Our goodwill of the firm is 1,10,000. Goodwill of the firm is 1,10,000. Goodwill of the firm is 1,10,000. Are you getting it? So it's not only about the average profit, it is about the adjusted profits. Okay, it's not only about the average profit, it is the average, it's the adjusted profit, which is a future maintainable profits. Are you getting it? Any doubt? Can you just quickly thumbs up or raise your hand that it's all clear? Okay, good, Hussein. Okay, perfect. Anyone has a doubt till here? Okay, great. I can see your hands up. Okay. So that is the first case of average profit. Then comes the next part, a super profit method. Super profit method. Let's go to super profit method. In the case of super profit, they say goodwill तभी बनती है अगर आप बिजनेस में नॉर्मल इंडस्ट्री में जितना कमाया जाता है उससे ज्यादा कमा के देते हो. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ वन ग्रोसरी शॉप. ग्रोसरी शॉप, एक ग्रोसरी शॉप है राम की, ठीक है, अच्छी प्राइम लोकेशन में है. उसके साथ साथ हमारे और भी शॉप्स हैं, सेम इंडस्ट्री, ठीक है, सेम इंडस्ट्री, वेयर बाय जस्ट सो ग्रोसरी शॉप राम की है, सेम लोकेशन, हाँ एकदम प्राइम लोकेशन पर उसकी शॉप है. और भी शॉप्स हैं सेम ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप्स. राम इज इंटेंडेड, लेट्स से वो अपना शॉप, अपना बिजनेस सेल करना चाहता है, इंटेंडेड टू सेल. तो उसने बोला देखो मेरे यहाँ पर ऐसी और शॉप्स भी हैं, 3 शॉप्स और हैं, वो तीनों नॉर्मली प्रॉफिट्स कमाते हैं 15% के हिसाब से, और मैं प्रॉफिट कमाता हूँ 18% के हिसाब से. Ram is earning more than the average profit in the industry. वो कहता है अगर मैं ज्यादा कमा रहा हूँ तो मेरा गुडविल वैल्यू बनता है कितने के हिसाब से? 3% के हिसाब से, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से जितना ज्यादा कमा रहा हूँ, अगर इंडस्ट्री में लोग 1 लाख रुपया कमाते हैं, मैं वहीं पर ही 1,50,000 कमाता हूँ, तो 50,000 rupees I am earning more, which is my super profit. And if you acquire my firm, if you acquire my business, आप सेम सुपर प्रॉफिट सेम लेवल पे अगले 3 साल भी कमा सकते हो. तो whatever the super profits you are assessing, into how many years you are going to have the same super profit in the business, multiply by it, you will calculate the goodwill.
So if in his example, if the average profit of the entire industry is 1 lakh, Ram is earning 1,50,000. He's earning more than industry. How much? 50,000. And you can earn the same 50,000 super profit for next 3 years. The goodwill would be 1,50,000. Simple. So the question says here, goodwill is equal to super profit into number of year purchase. How you calculate super profit? Industry कितना कमाती है, हम कितना कमाते हैं, हमारा एवरेज कितना, इंडस्ट्री का कितना. सो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. वी नो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. सेम है जो हमने गुडविल में अभी पढ़ा एवरेज प्रॉफिट मेथड में. इट्स द सेम. It's the same which you have just read in average profit method. Future maintainable profits. And normal profit मतलब industry कितना कमाती है. How you calculate the industry का money? You can see how much money they have invested, capital employed, and उस employment पे अगर वो 15% कमाती है, that is your normal rate of interest. So normal profit is capital employed into normal rate of return. And average profit is the profit which the business is earning. The difference between the two is super profit. जैसे मैंने example लिखा, उसमें बोला हमारा average है 150 का और normal industry कमाती है 1 lakh. तो super profit is 50,000. If super profit is 50,000 and they are buying it for 3 years, same profit. The goodwill for the firm is 1,50,000. Goodwill for the firm is 1,50,000. So super profit methods में now the point comes here, ये capital employed कैसे निकाला जाता है. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है. मैं इसको कोई फॉर्मूला में डिराइव नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट मेकिंग अ सिंपल बैलेंस शीट. मैंने आपको बैलेंस शीट के अप्रोच के अंदर आई एम जस्ट फिक्सिंग इट. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल मनी इन्वेस्टेड किसी भी फॉर्म में. टोटल मनी इन्वेस्टेड, कितना पैसा लगाया गया है वो डिपेंड करता है कैपिटल एम्प्लॉयड. और इसके लिए हम बचपन से सीखते आ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन इट इज ऑलवेज सेम. देखो बड़ा सिंपल लॉजिक है. आपके यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, राइट. यहाँ करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, correct, and capital equity, right. So if you take the asset approach, अगर आप कोई भी अप्रोच उठा लो आपका आंसर सेम आएगा. क्यों? एसेट माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल एंड कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट. तभी आपकी बैलेंस शीट मैच करती है. तो अगर मैं सारे एसेट्स में से सारी आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दूं तो कैपिटल आ गया. तो देयर आर टू अप्रोचेस टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड. इज इट फ्रॉम एसेट साइड अप्रोच? तो कुछ नहीं करो, सारे के सारे एसेट्स ले लो, ऑल एसेट्स टोटल मान लो सारे एसेट्स का, एक्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गुडविल, क्योंकि वो तो निकाल रहे हो. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये सब नहीं लेना है. एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड fictitious assets. What are fictitious assets? Fictitious assets are actually a dead assets like deferred revenue expenditure, ठीक है, preliminary expenses. इन सबको हटाने के बाद वो assets लेने हैं. Not goodwill. Why? Because goodwill तो we are calculating, तो उसको क्यों लोगे ऐड में. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्यों? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर एक्चुअली दोज इन्वेस्टमेंट्स which are there to earn revenue, ठीक है, by investing the funds, and they are not for the purpose of owning the business. ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती हैं. ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? which you are investing to another company for the extension of your own business. आपके बिजनेस को हेल्प करने के लिए अगर आप किसी और बिजनेस में पैसा लगा रहे हो उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स मतलब आपके पास पैसा पड़ा था, आपने लगा दिया, किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, किसी इक्विटी में डाल दिया, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं था. अगर क्वेश्चन में गिवन मेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, we will always take it as non-trade investment. A very important point.
If nothing is given, they have just written investment, nothing else, we will always treat it as non-trade investments. ट्रेड इन्वेस्टमेंट का नाम लिखा होगा तभी उसको लेना है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स लिखे हुए हैं तो उनको बाय डिफॉल्ट आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. एंड इफ यू टेक अ लाइबिलिटी अप्रोच, लाइबिलिटी अप्रोच में तो ऊपर एक ही चीज आ रही है, देखो कैपिटल, कैपिटल के अंदर और क्या आ जाते हैं, रिजर्व्स, किसी भी टाइप का रिजर्व, गुडविल फिर नहीं लेनी, और फिक्टिशियस एसेट्स भी माइनस कर दो, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी माइनस कर दो, तो ही आपकी बैलेंसिंग मैच करेगी बैलेंस शीट. मैंने एसेट साइड में से भी उनको हटा दिया और लाइबिलिटी साइड से भी उन्हीं तीनों चीज़ों को हटा दिया. So broadly, you just have to take capital and reserves. If there is any three things, just reduce it. Clear हुआ? So capital employed निकालने के लिए either you can use a liability approach or you can use a asset approach. Answer remains the same. आपको देखना होगा कि आपको information में उन्होंने क्या दिया है, which side they have given, right? So कई बार बच्चों को confusion होती है, अरे capital employed निकालने के लिए capital नहीं दिया, they have given PPE, you know, good intangible assets, patents, trademark, तो मतलब आपसे asset side की approach से capital employed निकलवा रहे हैं. A very important point. ये छोटे छोटे points ऐसे हैं जो हम miss कर देते हैं at the last moment. So I'm trying to cover those points. Is it clear? Anyone has a doubt till here? Okay, anyone? You can just write it quickly on in a chat box. If it is clear, then just write yes, it's clear, or no, it's not, no doubt at all. So I can just quickly go through it because this is a point which generally students miss out. Anyone? Can we have some answers in the chat box? I'm just checking those. Is it clear, guys? Anyone? Okay. Okay. Yes, clear. Great. Okay, so that's the super profit method. Let's talk about the question number 2 on the same. We have to calculate the value of the goodwill. Question number 2. Question number 2. This is question number 2, the question which I have given in your notes. Shall we start? Alok and Akash are the partners in Messrs Mega Enterprises. They admit Ashish as a partner with effect from 1st April 17. They agree to value the goodwill at 3-year purchase, which is a number of year purchase, by super profit method. तो सिंपल गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल सुपर प्रॉफिट दिया ही हुआ है तो इसका मतलब हमसे बोल रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करो, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन, सुपर प्रॉफिट इज मिसिंग. उसके लिए सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए we need to check how much profits the firm has, and same kind of a business, how much normal profits other businesses are earning. So for that we need to calculate the average profit. Average profit की कुछ कहानी नीचे दी हुई है, कैसे निकालना है average profit. They have given you the profit for last 5 years. और लास्ट 5 इयर्स में 2013 का 2 लाख रुपीस में बोला है उनका, उसके अंदर 25,000 रुपीस फिक्स्ड एसेट का सेल है. इट इज एबनॉर्मल गेन, रिड्यूस इट, इट बिकम्स 1,75,000. 1,70,000 includes abnormal loss, add back, it becomes 2,20,000. For other 3 years there is no change.
all 5 years, divide by 5. The average profit is coming 2,17,000. 2,17,000. How we calculate normal profit? What is the total investment? 15 lakh. And similar kind of a businesses have a tendency to earn 10% of their earned profits. So that means they can earn easily 1,50,000. But Alok or Ashok का business कमाता है 2,17,000. So there is a super profit of 67,000. Just fix this figure in super profit and you will get the answer, which is 2,01,000. ये firm की goodwill है. This is firm's goodwill. Right? Now in this question, sometimes they ask you stock के बारे में ना एक adjustment. I just quickly cover that. They use the word undervaluation and overvaluation. They use the word undervaluation and overvaluation. So what do you mean by undervaluation and overvaluation? Let's talk about undervaluation and overvaluation. एक बार बहुत पहले पेपर में ये चीज़ पूछी हुई है. अभी रिसेंटली एमटीपीज और प्रीवियस ईयर पेपर्स में नहीं दिखा बिकॉज इट्स अ न्यू कोर्स. सो अभी 2024 से तो नहीं दिखा है, बट आई एम स्टिल कवरिंग इट. ठीक है, so I'm just covering it to make you understand. Okay, so let's do the undervaluation and overvaluation. देखो सिंपल लॉजिक है. मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लिख रही हूँ. सपोज कंपनी के एवरेज प्रॉफिट्स हैं 75,000 के, और उन्होंने बोला है इस प्रॉफिट के अंदर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इंक्लूडेड है. ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज इंक्लूडेड. कितना ओवर वैल्यूएशन इंक्लूडेड है? 5,000. ठीक है, 5,000 इसमें इंक्लूडेड है. चलो पहले अंडर वैल्यूएशन करते हैं. चलो 75,000 है और इसके ऊपर इट इंक्लूड्स द अंडर वैल्यूएशन. अंडर वैल्यूएशन का क्या मतलब है? स्टॉक 5,000 से कम है. तो प्रॉफिट बढ़ाओगे या कम करोगे? आई रिपीट, प्लीज गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स. माय एवरेज प्रॉफिट इज 75,000 एंड दे आर सेइंग देयर इज अ अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक व्हिच इज 5,000. माय क्वेश्चन टू यू इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से, स्टॉक इज विच स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक. अगर मेरा स्टॉक कम है, क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो प्रॉफिट को बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए. इफ माई स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 5,000 rupees, do I need to increase the profit or decrease the profit? Give me the answer quickly. I got two answers. What needs to be done? Increase or decrease? Anyone? Okay. Yes, that's right. We should add, we should increase. That's right. 80,000 हो जाएगा प्रॉफिट, ये ध्यान रखना. We should increase the profits. Right? तो आगे क्वेश्चन आपका चलेगा. तो गुडविल आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पे निकलना चाहिए. और अगर यही चीज ओवर वैल्यूएशन में होती तो लेट्स से ओवर वैल्यूएशन है. सपोज कंपनी का प्रॉफिट दिखा रहा है 2,50,000 और वो कहता है यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन है जी, ओवर वैल्यूएशन है, लेट्स से ओवर वैल्यूएशन इज फॉर 10,000. तो अभी क्या करेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बिकम्स 2,40,000. स्टॉक का अमाउंट ज्यादा है. इफ द स्टॉक अमाउंट इज हायर, द प्रॉफिट वुड बी हायर. इसका मतलब इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स हैं, वो गलत प्रॉफिट्स हैं.
correct the profits, we will reduce it. A very, very common error which I have seen in the previous papers. Okay. That is the second method of super profit. The third method is capitalization method. Capitalization method. Now that capitalization method, again we divided into two parts: capitalization of average profit and capitalization of super profit. What is capitalization of average profit? They say it's a simple logic. गुडविल निकालने के लिए जो भी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइज्ड वैल्यू? आई एम कमिंग ऑन दैट. माइनस नेट एसेट्स. व्हाट डज दैट मीन? आपके बिजनेस के पास कितने नेट एसेट्स हैं और उसके ऊपर आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो इज द गुडविल. कैपिटलाइजेशन कॉन्सेप्ट. let's take a simple example. We are earning 1 lakh rupees profit and the normal rate of return is 10%. तो मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी हुई? 10 लाख. दिस इज अ कैपिटलाइज्ड वैल्यू. मतलब बिजनेस की वैल्यूएशन हम निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट्स व्हिच वी अर्न. So if the profit is of 1 lakh rupees and they have a tendency to have a normal rate of return in the industry is 10%, तो capital value is 10 lakh. And business का net assets means assets minus liability. Balance sheet में net assets दिख रहे हैं 8 लाख के, तो goodwill कितनी हुई? 2 lakh. So capitalized value means whatever profits you are earning on normal rate of return, and net assets means assets minus liability. So if you calculate, why we are talking about the capitalization of average profit? क्योंकि business की valuation निकालते हुए वो average profit का base ले रहा है. To calculate the capitalized value, they are taking the base of average profit, and that is how average profit upon normal rate of return is your CV, capitalized value, minus net assets is your goodwill. Clear? The second method is capitalization of super profit. ये तो बहुत ही सिंपल है. सुपर प्रॉफिट, हमने एवरेज प्रॉफिट में क्या किया? एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. यहाँ पे सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. Now we don't need to do capitalized value minus net assets here. The reason is super profit has been calculated on the basis of normal rate of return only. How you calculate super profit? Super profit is actually the average profit minus normal profit. तो क्यों दोबारा वही एक्टिविटी करोगे? 2 बार थोड़ा ना करोगे. एक सुपर प्रॉफिट Yeah. Can you hear me, guys? Yes, ma'am. Okay. So again, I repeat this example. Example says average profit is 1 lakh, normal rate of return is giving 10%. Asset is 10 lakh, liability is 1,80,000. Normal, the number of year purchase is 3 years. So I'm calculating this all information by all 4 methods. Which 4 methods? Average profit, super profit, capitalization is again divided into 2. Capitalization of average profit, capitalization of super profit. मैं चारों से निकाल रही हूँ ये. Average profit कैसे निकालते हैं? Goodwill is equal to average profit into number of year purchase. Average profit is 1 lakh, number of year purchase is 3 years. So goodwill is 3 lakh.
सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. राइट. सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज माइनस नॉर्मल. एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 1 लाख. And what is normal profit? Normal profit is assets minus liabilities, which is 8,20,000. The difference between the two is 18,000. देखो, capital employed is asset approach. Asset minus liability is 8,20,000. Normal rate of return is 10%. तो normal profit कितने हो गए? 82,000. 82,000. 1 lakh minus 82,000. Super profit is 18,000. Just multiply with number of year purchase, we'll get the goodwill by super profit method. Capitalization method, capitalization of average profit, which is simple, capitalized value minus net assets. Capitalized value क्या है? Average profit, which you have already calculated 1 lakh, minus 1 lakh. Capitalized value कैसे निकालते हैं? Average profit में average profit upon normal rate of return. Average profit is 1 lakh. Normal rate of return is 10%, which is coming out to be 1 lakh. Net assets is 820. Goodwill becomes 180. Super profit method से goodwill निकालनी है तो super profit upon normal rate of return. Super profit is already calculated 18,000 divided by 10%. It's 1,80,000. By chance यहाँ पे capitalization method में goodwill दोनों method से same आ रहा है. It is not necessary. It is not necessary. Okay. तो जब हम लोग सेल करते हैं कोई चीज, हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा गुडविल दिखाएं. तो वो जो मेथड में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दिख रही होती है, हम प्रैक्टिकली वही मेथड अप्लाई कर देते हैं. उसी में नेगोशिएशन ज्यादा होता है. ठीक है, क्लियर हुआ? सो दिस इज अबाउट द कैपिटलाइजेशन. दिस इज अबाउट द कैपिटलाइजेशन मेथड वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द गुडविल. गुडविल के 3 मेथड्स मैंने बताए और थर्ड मेथड के मैंने फर्दर 2 पार्ट्स कर दिए. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. क्लियर? सो दिस इज अबाउट योर second part of today's lecture, that is goodwill. Okay. Now coming on, just quickly take a sip of water and quickly we'll start in next 1 minute. We are starting up with the admission of a partner. Admission of a partner. Admission of a partner. Okay, let's start with admission of a partner. जो भी बातें मैं आपको एडमिशन में सिखा रही हूँ, उसका सारे के सारी एडजस्टमेंट्स रिटायरमेंट और डेथ में भी है. द ओनली थिंग इज हियर द न्यू पार्टनर इज कमिंग इन एंड रिटायरमेंट और डेथ में one partner is going out. Shall we start, guys? Shall we start, guys? Are you there, everyone? Are you ready? Because this is going to be the first main chapter today. Okay.
Okay, let's start with admission of a partner. Now, in the case of admission, already the business is going on, but due to the new skill, due to the new experience we require, we are adding one more member in the firm who is a partner, who is coming as a new partner. And when that new partner will come in, of course, वो फ्री में तो आएगा नहीं, वो अपने साथ अपने नाम की कैपिटल लेके आएगा. कैपिटल लाने के बाद, अभी उसके आने के बाद, the already existing partner has a problem because they have to share their profits. अब वो नए पार्टनर के आने की वजह से बेचारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को पैसा कम मिलने वाला है, प्रॉफिट्स कम मिलने वाले हैं, शेयर बढ़ जाएगा. शेयर वुड बी नाउ बिटवीन 3 people rather than 2 people maybe. And on that basis, due to that sacrifice which the existing partners are doing, they will ask the money from the new partner. वो बोलते हैं भाई तुम कैपिटल ला रहे हो, ओके, बट तुम्हारे आने की वजह से will be at a lesser profits in future. Give us the money now only. We are sacrificing because of you. Please give us money. And thereby the new partner has to give a premium to the existing partner. And that premium is called premium for goodwill. उसको premium for goodwill बोलते हैं. Now, what is premium for goodwill? It is basically a total firm का goodwill. उसमें से जो भी नया partner आ रहा है वो अपने हिस्से का goodwill लेके आएगा और आके वो चुपचाप existing partners को दे देगा, जिसको जितना loss हो रहा है बांट देगा. We'll talk about this. So, admission of a partner means after admission, new partner has 2 rights. One, right to share the profit and losses, and right to share in the assets as well. आज से जब से वो आएगा एंटर करेगा फॉर्म में, तब से सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज में भी उसका राइट होता है. ही इज लायबल फॉर द लायबिलिटीज एंड ही हैज अ राइट इन द एसेट्स. Because of this, we have to do some adjustments. There are 5 adjustments which we will be talking about it. What are those 5 adjustments? पूरे एडमिशन में यही 5 एडजस्टमेंट्स हैं. रिटायरमेंट में भी यही है. Admission, there is first thing, the profit sharing ratio will be changed. First treatment. Second, we need to treat goodwill. Third, already जो profits या already जो reserves होंगे उसमें किसका हिस्सा. New partner will not enjoy those already accumulated profits or the reserves which the firm already has. If now new partner has a right on the assets also, we need to revalue the value of the assets and the liabilities also. Henceforth उसके पास भी यही सब हिस्सा जाने वाला है. तो अगर कुछ उनको प्रॉफिट हो रहा है, उसके आने से पहले ही वो सब बांट के खा पी के बैठेंगे कि नहीं यार हम उनको नहीं देंगे कुछ. We are not going to give anything to the new partner. Henceforth he will get everything. And the last most important adjustment is adjustment of capital. So we'll take all these adjustments one by one, and the same adjustments there we have in retirement also. So please hear it listen it very properly, because this is a base for retirement as well as death for our second part of our lectures today. Okay. First one comes change in profit sharing ratio. We'll discuss this thing with a lot of examples. I'll cover maximum of the examples in a quick manner. Change in profit sharing ratio. Let's take a first example. A and B are the partners, 5:3 ratio. C is coming for 1/4 share. We need to calculate what would be the new PSR. If C is coming for 1/4 share, the remaining share becomes 3/4. And this 3/4 share will be divided between A and B now, because C is coming for 1/4, uska intact hai. C will be getting 1/4, the remaining share would be 3/4, will be divided between A and B. In which ratio? 5:3 ratio. So A का नया share कितना हो जाएगा? A's new share is 3/4 into 5/8. 3/4 into 3/8. मैंने उसी रेशियो से उनको मल्टीप्लाई कर दिया. I got a new number. 3 5s are 15. 15/32 and 3 3s are 9. 9/32. C का share is 1/4. We need to common the denominator.
32 और 4 में कॉमन फैक्टर है 8, 8 ones are 8, 8 by 32. So the new ratio would be 15:9:8. Second example, XYZ 3:2:1. W is coming for 10% share. 10% means 10 upon 100, which is 1/10. The remaining share कितना बचा? 9/10. 9/10 will be divided between these three partners in 3:2:1 ratio, which is 3/6, 2/6 and 1/6. W is for 1/10. 60 और 10 के अंदर कॉमन है 6, तो 6/60 would be the W's share. So entry would be, the ratio would be 27:18:9:6, which will be shortened by dividing it by 3. 9:6:3:2. Clear है? So these are the two examples. The third example, A, B, C partners हैं. One A, B, C. A, B is a partner. C is coming for a new partnership, 1/4 share के लिए. Future में A and B will have 2:1 ratio. ठीक है, फ्यूचर में A and B will have a new share, new ratio. उन दोनों की न्यू रेशियो दी हुई है 2:1. तो हमें A and B की ओल्ड रेशियो से कोई लेना देना नहीं है. न्यू PSR कैसे निकलेगा? C अगर 1/4 के लिए आ रहा है तो रिमेनिंग शेयर कितना? 3/4. 3/4. 3/4 को सेम 2:1 में डिवाइड कर दो. 3/4 into 2/3, 3/4 into 1/3. 3 2s are 6, 3 1s are 3. सिंपल. हम ओल्ड रेशियो से डिवाइड तब करते हैं जब हमें न्यू रेशियो ना दी हो. अगर ऑलरेडी न्यू रेशियो दो पार्टनर्स की नहीं दे रखी है तो वही हमारे लिए वैलिड हो जाती है. ठीक है. देन कम्स fourth, A and B are the partners, 5:4 ratio. C is coming for 1/10 and they are agreeing. C का जो ये शेयर है ना 1/10, कौन देगा? A और B देंगे. कौन सी रेशियो में? 1:1. What does that mean? 1/10 का हाफ शेयर A देगा, 1/10 का हाफ शेयर B देगा. This 1/10 share is being getting from A and B in which ratio? Equal ratio. मतलब 1/10 का half 1/20th और B is also giving 1/10 का half 1/20th. दोनों 1/20th शेयर A दे रहा है, 1/20th शेयर B दे रहा है. अगर A अपने शेयर में से 1/20th शेयर C को देगा तो A के पास नया शेयर कितना बचेगा? It is from his share. So 5/9 उसका old शेयर था. They are giving 1/20th share, so 5/9 minus 1/20. You will get a new number. B's new share 4/9 minus 1/20. And C's new share 1/10 is equal to, denominator same कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा 18/180. 18/180. That is another example of PSR. शायद इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, बट अगर PSR निकालना पड़े या sacrifice ratio निकालना हो, so these are the probable cases which can be a part of it. Naresh and Namit 2:1 ratio. Ganesh is coming for 25% share. 25% मतलब 1/4 share. And that 1/4 share Naresh and Namit is ready to give in which ratio? 3:2. So 1/4 शेयर गणेश का है एंड वो शेयर 3:2 में ले रहे हैं. तो 1/4 का 3/5, 1/4 का 2/5, which is coming 3/20 and 2/20. कौन कौन दे रहा है? नरेश दे रहा है और नमित दे रहा है. तो दोनों के शेयर में से उतना उतना माइनस हो जाएगा. These are all the probable cases, guys. Please go through it very, very nicely because इनमें से अगर वहाँ क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर रेशियो चाहिए, which is very much relevant while calculating the adjustment of capital. कैपिटल जो हमारी एडजस्टमेंट नंबर 5 है, वहाँ हमें न्यू रेशियो चाहिए होती है, तो वहाँ पर एक काम आ सकता है. 6th, A and B are the partners, 3:2 ratio. C का रेशियो नहीं पता,
सी जो आ रहा है उसका हमें शेयर नहीं पता, बट उन्होंने बोला है ए गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। अभी आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन और माइनस। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अपने शेयर का 1/5 ए दे रहा है, एंड बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो ए का कितना सैक्रिफाइस, ए इज गिविंग अपने शेयर का 1/5। तो ए का शेयर कितना, 3/5 इंटू 1/5, इट इज 3/25। ए इज सैक्रिफाइसिंग whatever A is sacrificing, C is getting। B का सैक्रिफाइस, he is giving 2/5 of his share। B का शेयर कितना था, 250 था, तो 2/5 शेयर का 2/5 B is giving 425। तो जो B सैक्रिफाइस कर रहा है वो किसको मिल रहा है, वो भी A को मिल रहा है। दोनों को प्लस करोगे तो C का शेयर निकल आया। एंड वॉट एवर ए इज सैक्रिफाइसिंग और बी सैक्रिफाइसिंग, उतना शेयर उन लोगों का कम हो जाएगा। तो ए का नया शेयर कितना आ जाएगा, ओल्ड शेयर वॉज 3/5, दे आर सैक्रिफाइसिंग 3/25, तो न्यू शेयर विल चेंज। न्यू शेयर विल चेंज इन ए एंड बी's केस, right? So whenever they give you of his share, here the sacrifice between both the A and B would be 1/5 of his share and 2/5 of his share, which is A sacrifices 3/25, B sacrifices 4/25. तो उनका रेशियो है 3:4, and we reduce it from the existing share, right? A very interesting 7th point, case 7 है ये। A, B, C 3 पार्टनर्स हैं, 2:2:1 की रेशियो में। D is coming for 1/6 share. D is coming for 1/6 share. अब अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम बोलते D is coming for 1/6 share. The remaining share is 5/6. 5/6 A, B, C में डिवाइड कर दो। बट यहाँ क्या हो रहा है, C wants to retain the same share. C कह रहा है मेरा शेयर चेंज नहीं होगा। C का शेयर कितना है, 1/5, राइट? C का शेयर इज 1/5, 2, 2, 1, 1/5। इसका मतलब D का शेयर भी फ्रीज हो गया 1/6 और C का शेयर भी फ्रीज हो गया, दोनों का शेयर फ्रीज है। 11/30 शेयर इज फ्रीज, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 19/30। वो कौन लेंगे, A और B। Which ratio, 2:2, which is 1/2, 1/2। तो अगर हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर भी शेयर चेंज करने के लिए रेडी नहीं होता तो कोई बात नहीं, C एंड D दोनों का इंटैक्ट कर दो, द रेशियो विल बी चेंज्ड। सो बाकी रिमेनिंग शेयर A और B का माना जाएगा। A's न्यू शेयर वुड बी रिमेनिंग शेयर इनटू उसका हिस्सा, B शेयर वुड बी रिमेनिंग शेयर उसका हिस्सा, एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, these all are the advanced cases you may not get in the paper, but these are very classic cases of PSR. Let's take a simple example. Madan and Mohan, दो partners हैं, 3:2. Case number 8. Gopal is coming for 3/10 share. और क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है, गोपाल जो 3/10 के लिए आ रहा है ना, उसका हाफ ऑफ द शेयर, मतलब 3/10 का हाफ शेयर इट इज गिफ्टेड बाय मदन। मदन कह रहा है ऐसे ही ले लो मुझसे यार, तो 3/10 का हाफ शेयर इट्स अ गिफ्ट, दिस 3/20 इज अ गिफ्ट। और रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 3/10 का हाफ मदन ने दे दिया। 3/10 का हाफ इट इज गिवन बाय मदन एंड मोहन इक्वली, तो रिमेनिंग शेयर जो 320 बचा वो भी मदन और मोहन इक्वली दे रहे हैं। इसका मतलब मदन इज सैक्रिफाइसिंग 2 टाइम्स। एक तो मदन ने गिफ्ट में दे दिया और एक मदन मोहन के साथ भी शेयर कर रहा है। तो 3/20 का हाफ इज 340, दिस इज ऑल्सो मदन, दिस इज ऑल्सो मदन, एंड मोहन का शेयर 3/20 का हाफ 3/20, 40 मोहन। सो मदन का नया शेयर क्या हो जाएगा, मदन का नया शेयर 2 सैक्रिफाइसेस के बाद क्या हो जाएगा, हिज ओरिजिनल शेयर वाज 3/5
3/5 माइनस, एक तो उस बेचारे ने गिफ्ट दिया और एक उसका शेयर और माइनस हो रहा है, तो 2 माइनस हो जाएंगे मदन के बुक्स में से, 3/20 एंड 3/40, 3/20 एंड 3/40, एंड मोहन 2/5 माइनस 3/40 एंड डन। गोपाल का तो हमें पता ही है, गोपाल का शेयर तो दिया ही हुआ था, ठीक है। That is all the cases of the new profit sharing ratio. Now coming on a sacrifice ratio. A and B are the old partners. These are the old partners. 1:1. C is coming for 1/3 share. C is coming for the 1/3 share. इसका मतलब जो पहले प्रॉफिट्स दो लोग बांट रहे थे, अब वही प्रॉफिट्स 3 में बटेंगे, A, B और C. In that case, A का कुछ हिस्सा C ने लिया और B का भी कुछ हिस्सा C ने लिया. Because of entry of a C's partner, A and B has sacrifice. जो भी उन्होंने sacrifice किया, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? Sacrifice ratio. Sacrifice ratio. I repeat. A and B partners थे 1:1. C is coming for 1/3 share. उसके आने से पहले की सिचुएशन क्या थी? जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होता था दोनों बांट लेते थे. बट इफ C is coming in, बेचारों का हिस्सा थोड़ा स्क्वीज हो गया, श्रिंक हो गया, बिकॉज नाउ द थर्ड पार्टनर इज शेयरिंग इट, एंड दैट इज व्हाई सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी. दोनों ने सैक्रिफाइस किया ना, दोनों ने सैक्रिफाइस किया, तो दैट इज वेयर द सैक्रिफाइस रेशियो वर्क्स ऑन ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. A very important aspect, सैक्रिफाइस रेशियो पूरे एडमिशन में सिर्फ एक जगह यूज होता है, सिर्फ एक जगह. पता नहीं बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है, कभी सैक्रिफाइस लगा देते हैं, कभी न्यू. नथिंग डूइंग. सैक्रिफाइस रेशियो इज ओनली एप्लीकेबल इन वन केस, दैट इज गुडविल. गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइस रेशियो यूज होता है. अदर देन दैट, no sacrifice, nowhere sacrifice ratio is eligible. तो पहला की टेक अवे ऑफ एडमिशन, प्लीज डोंट यूज सैक्रिफाइस रेशियो एक्सेप्ट गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, और कहीं यूज नहीं होता. तो पहला आपका कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है. ऐसे ही रिटायरमेंट और डेथ में सैक्रिफाइस की जगह होता है गेन, वहां पे भी सिर्फ गेनिंग रेशियो एक ही जगह यूज होता है, वो है गुडविल, और कहीं यूज नहीं होता, ठीक है. ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज माय सैक्रिफाइस रेशियो. प्लेन वैनिला क्वेश्चन के अंदर व्हाट डज दैट मीन? सपोज मेरे पास सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी 3:2 के रेशियोज में है, ठीक है. सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, तो आप न्यू रेशियो निकालो, जो भी करो, लेकिन उनका सैक्रिफाइस रेशियो ना ओल्ड रेशियो ही होता है. सिर्फ ये केस के अंदर मेरा सैक्रिफाइस रेशियो ही ओल्ड रेशियो होता है, बाकी केसेस में आपको निकालना पड़ेगा. तो सैक्रिफाइस रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, और वॉट एवर ओल्ड माइनस न्यू, आप जो भी करोगे, न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो माइनस में आ जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू, वॉट एवर सैक्रिफाइसिंग दे आर डूइंग इट, यू नीड टू कैलकुलेट इट इन अदर केसेस अदर देन दिस प्लेन वैनिला. ये मेरा केस 1 था, दिस वॉज केस 1. रिमेनिंग शेयर 3/4, 3/4 इज डिवाइडेड इंटू 3:2 रेशियो. प्लेन वैनिला केस के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो ही होता है, वहां निकालना मत, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट. ओके, सो दैट्स अ सैक्रिफाइस रेशियो. यहाँ सब जगह मैंने निकाला है, कई जगह वो बोलता है 3:2 की रेशियो में है, तो निकाल लेंगे. फ्रॉम अ बिगर क्वेश्चन ऑफ 10-12 मार्क्स, 10 मार्क्स, you don't generally get the question to calculate a sacrifice ratio. You may get a question to calculate for the adjustment of capital, you need a new ratio. तो new ratio के लिए आपको ये cases चाहिए होंगे. So please you can just before your exam, please quickly just go through these cases separately. जब आप घर पर revision भी करोगे
for now for the September, for like 1 week whenever you are keeping a target कि मुझे 3 दिन या 4 दिन में पूरा अकाउंट्स फिनिश करना है, आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा, यू जस्ट नीड टू रिवाइज ऑल द एडजस्टमेंट्स, जैसे हम लोग एडजस्टमेंट नोट्स में लिखते हैं, वो एडजस्टमेंट्स आपको दोबारा से देखने चाहिए, right? And then once you finish the chapter, you can give it a trial, that you are going to give one question trial for your MTP or for your RTP क्वेश्चन, ठीक है? किसी भी RTP का एक क्वेश्चन उस चैप्टर का उठा के कैलकुलेट करके चेक कर लो कि आपको वो एडजस्टमेंट्स अप्लाई करनी आ रही है या नहीं आ रही है. दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड वंस यू फिनिश 4 days में रिविजन अकाउंट्स का, इट्स मैंडेटरी, इट्स स्ट्रांगली सजेस्टिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज गिव वन MTP, क्योंकि एक एक चैप्टर की रिविजन करके चेक करना इज इजी. जब आपको सारे चैप्टर्स एक साथ एक ही पेपर में करने आते हैं, तो आप मान के चलो, इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड 100%, you will only able to revive in your paper 80% of it. सिंपल लॉजिक है. अगर आपने तैयारी 50% की है, तो you will be only able to learn, revive there in the paper 40 marks का. और 40 marks में से आप लिख कितना पाते हो, you can easily assess it. So I generally say whatever you prepare, पेपर तक पहुंचते पहुंचते वो 80% हो जाता है, ठीक है? और 80% को पेपर में उतारने में फिर और 10-20% नीचे कर लो, right? Because while writing you have more anxiety, so you need to be very calm while writing the paper. और रीडिंग टाइम के अंदर इट्स अ वेरी क्विक थिंग. रीडिंग टाइम के अंदर you don't need to read the question, just see the requirement of the question, every question. एंड घर से ही आपको मालूम होगा कि आपके कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, तो आपको वो चैप्टर्स नहीं ढूंढने. यू डोंट नीड टू सर्च फॉर दोज चैप्टर्स विच यू डोंट नो, यू नीड टू सर्च फॉर दोज चैप्टर्स विच यू हैव अ स्ट्रॉन्गर हैंड. दैट इज कॉल्ड एज अ प्लान ए. अगर आपको लगता है कि मेरा डेप्रिसिएशन स्ट्रॉन्ग है, मेरा पार्टनरशिप में एडमिशन और रिटायरमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहले वही ढूंढो. अगर आप घर से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर नहीं करके गए हो, तो आपको ये नहीं ढूंढना अरे वो पहले मैं देख लूं कितने मार्क्स का आया है. जितने मार्क्स का भी आया हो आप करने वाले नहीं हो. सिंपल लॉजिक. सो यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी. प्लीज फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स विच यू हैव एंड देन कम बैक टू द to your plan which you have already made it at home, कि मैं पहले कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं. So for example क्वेश्चन नंबर 120 मार्क्स का होता है. इफ यू कैन क्विकली सी कि उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं, तो आप पहले वो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में पहले क्वेश्चन को मत देखने बैठो. पहले आप बाकी पूरा प्लान एक सीक्वेंस सेट कर लो. स्टिल यू 7 मिनट्स में वो सीक्वेंस बन जाती है. यू स्टिल हैव 8 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम. क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चंस हैं आप रीड करके उसके आंसर्स माइंड में रख सकते हो ना, क्योंकि आप लिखोगे तो 2 बजे से ही. सो दैट विल रियली हेल्प यू. So please, whenever you do that reading time is very necessary. ठीक है? उसको properly use करना is important. आप अगर सिर्फ ये बोलो कि नहीं ठीक है यार बैठ जाते हैं अभी, ठीक है 2 बजे देखेंगे, नहीं. आप पहले अपना प्लान ए जो सोच के गए हो उसके हिसाब से अपने हायरार्की बना लो कि मुझे पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है. 7 मिनट्स में डन कर दो. 8 मिनट से क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको रीडिंग करके उसके आंसर्स फ्रेम करना स्टार्ट कर दो माइंड में. 8 मिनट में आप वो आराम से कर पाओगे. और 2 बजे जैसे ही आंसर शीट मिलेगी यू कैन जस्ट पुट इट, मैप्ड इट इन योर पेपर ना. सबसे पहले वही उतार दो. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आप आराम से 10 से 12 मिनट में कर सकते हो, rather than taking 20-25 minutes. But please utilize your reading time very effectively. अगर वहां बैठ के प्लानिंग करने बैठे हो नहीं हो पाएगा. You can't plan there. You can only implement the planning there. So there is a difference. Are you getting it? So we are just taking a break now, guys, and we are continuing the admission chapter after a break from your adjustment number 2, goodwill. Please be on time. We'll start the lecture at 1:30. So it's half an hour break. So please come quickly after just grab something and come back. Okay.